this is the crowd. A massive crowd has in fact gathered out here at Dadar to protest against not just against Bilawal Bhutto, but also against Mahavikas Aghadi. Remember, on the other hand, Mahavikas Aghadi is also carrying out protest in the city. But so far, BJP seems into the action, and massive protest is called out at Dadar. In fact, will try to speak to few of the leaders. जिस प्रकार का स्टेटमेंट महाविकास आघाड़ी के नेता सुषमा अंधारे हो या संजय राउत हो, कहीं ना कहीं हिंदू देवी देवताओं का अपमान है, महापुरुषों का अपमान है। जो पार्टी शिवसेना के जो स्थापना जिन्होंने की थी, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे, वो नाम में ही हिंदू सम्राट है। तो आज सोचिए, वो पक्ष के जो कार्यकर्ता है, उनके मन को और बाला साहेब की आत्मा को कितना दुख हो रहा होगा। उनके जो स्टेज से जो प्रमुख वक्ता अंधारे बाई को जिया है, जो हिंदू द्वेष नहीं है, आज भी हिंदू द्वेष करती है, आगे भी करेगी। जहाँ पद्धति से वो अपने देव देवताओं के बारे में पहले बोली है, वो देखो, पार्टी बदलने से किसी का विचारधारा नहीं बदलती। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जब 2 खासदार था, तभी भी हमारा जो विचारधारा थी वही था। आज 303 है, तभी भी वही है। महाविकास आघाड़ी के साथ जाने के बाद शिवसेना हिंदुत्व छोड़ चुकी है, पूरी तरह से छोड़ दी है। जैसे अभी 15-20 दिन पहले ही सामना में उद्धव जी ने बोला था कि आगे आने वाले कॉर्पोरेशन में हम लोग मराठी और मुस्लिम ये गणित को लेके हम लोग जीतेंगे। इसका मतलब क्या है? उन्होंने हिंदुत्व छोड़ दिया है। अगर उनको हिंदुत्व कि वह हिंदुओं के भावना की थोड़ा भी चिंता रहती, आज ये जो औरत को नीच औरत है, इसको स्टेज पे रहने की उनको ये परमिशन नहीं मिलती। So anger over Sushma Andhare's statement has been, protested, and in fact, for the same reason, a massive protest is called out here at Dadar, and you can see in the visuals. You can see in the visuals. My DJ will show you in the visuals that a massive protest has been called out, and Bilawal Bhutto. Posters has been in fact raised out, has been given an image of a pig. So definitely a massive protest is called, and protest over Bilawal Bhutto's statement, protest over Sushma Andhare's statement, protest over Sanjay Raut's statement, and the rest of the Mahavikas Aghadi leaders' statement, and for the same reason the protest is carried out here. Life will test you. It will turn your world upside down. Again. And again. And again. The only way to hit back is to stand up. Stand up every time. And say, I'm not done. कुछ मेरा, कुछ तुम्हारा। इसलिए ग्रीन लैम लैमिनेट्स, सपने आपके, लैमिनेट्स हमारा। अमेजिंग स्पेसेस के लिए कुछ मेरा, कुछ तुम्हारा। क्या हुआ रोहन, क्या सोच रहा है? रिया, पहली सैलरी मिली है, तुम भी कुछ आइडिया दो, एक्सपेंसेस को कैसे प्लान किया जाए। रोहन, एक्सपेंसेस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट प्लान करना भी जरूरी है। देखो, सैलरी का कुछ हिस्सा घर के रेगुलर खर्चे के लिए और कुछ मैं अपने लिए भी तो सोच सकता हूँ ना, लेकिन इन्वेस्ट कहाँ करूँ? सिंपल है, एनपीएस में। एनपीएस में? रिया, अभी तो मैंने कमाना शुरू किया है, इतना आगे के लिए अभी से क्यों पैसे जोड़ूं? वो देखो, एक एक करके ईंट जोड़ी जाती है, तब जाके एक घर तैयार होता है। वैसे ही अभी से पैसे जोड़कर हम भी अपना रिटायरमेंट सुखी बना सकते हैं। बात में तो दम है। एनपीएस कम लागत वाली फ्लेक्सिबल लॉन्ग टर्म योजना है।
जिससे आपकी बचत ग्रो होकर पेंशन का लाभ देती है। अच्छा, फिर तो मैं अभी अपना एनपीएस अकाउंट ओपन करता हूँ। जो कल की सोचते हैं वो आज से ही थोड़ा थोड़ा जोड़ते हैं। पेंशन है तो टेंशन नहीं। एनपीएस में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। Hey Rahul, what's up? Hey, kicked about our first date? Of course. Benefits up to rupees 30,000 only at the Citroën C3 Carnival. Book today. Magnificent picture, magnificent sound, magnificent experience. Magnifique. High performance TVs by Aiwa Japan. Now in India. News in brief, viewers. The teacher who attacked class 5 girl with scissor pushed off from the first floor has been suspended with immediate effect. Meanwhile, the Municipal Corporation of Delhi will bear all expenditure on the medical treatment of the student. A combined graduation parade was held at the Air Force Academy, Dundigal, Hyderabad to mark the successful completion of the pre-commissioning training of the flight cadets of the various branches of the Indian Air Force. Apex Child Rights Body NCPCR has summoned EdTech Byju's CEO over allegations that it is indulging in malpractices to lure parents and children to buy their courses. According to sources, Byju's is facing a range of complaints on social media platforms and consumer websites, with customers alleging that they were exploited and deceived. BJYM supporters staged protest against Pakistan Foreign Minister Bilawal Bhutto over his remarks against the Prime Minister Narendra Modi. Effigies were burnt and slogans were raised by angry protesters against Pakistan. Six members of a family were burnt alive after a fire broke out in their house in Telangana's Mancharilya district. A fire brigade team rushed to the spot, but the time that they reached, all the family members, including 2 children, had died. Further investigation is underway. Time now here for a short break, viewers, getting you updates on the other side of the Pakistan Foreign Minister Bilawal Bhutto, in fact, insults Prime Minister Narendra Modi. Protests continue over Bilawal's remark. And also getting you updates of how the death toll in Bihar Hooch tragedy rises to 70, yet Chief Minister Nitish Kumar says no sympathy for the people who consume that liquor. Ladies and gentlemen, You expected the puzzle. but for a law person, this is not a game. Explain it to us, detective. Everyone is in danger. All right, when's the murder mystery start? Your favorite service provider, 10, which gets you the best of entertainment, is back with something very special. अभी मजा आएगा ना भिड़ो. Your 3 favorite movie channels are bringing in super blockbuster films with features like wider picture and crystal clear sound straight to your home. Wow. Oh, I love that expression. To subscribe to your favorite channels, contact your local cable TV operator today or call DEN toll-free number 1-800-419-2020 now. अब पापा देखिए, आप लोग को छोड़ के मैं कहीं नहीं जाने वाला. छोड़ने की बात कौन कर रहा है? अरे यहीं पास में कोई एक घर देख लो. वैसे भी हम कब तक तुम्हें झेलते रहेंगे?
सच्चा दोस्त वही जो आपके बारे में सोचे। होम लोन्स फ्रॉम IDBI बैंक। बैंक ऐसा, दोस्त जैसा। India welcomes those who further India's pride across the globe. Indian diaspora, partners of New India's growth journey in Amrit Kaal. Come and be a part of the 17th Pravasi Bharati Divas from 8th to 10th January 2023 at Indore, Madhya Pradesh, India. For registration, log on to pbdindia.gov.in. क्या हुआ रोहन, क्या सोच रहा है? रिया, पहली सैलरी मिली है, तुम भी कुछ आइडिया दो। एक्सपेंसेस को कैसे प्लान किया जाए? रोहन, एक्सपेंसेस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट प्लान करना भी जरूरी है। देखो, सैलरी का कुछ हिस्सा घर के रेगुलर खर्चे के लिए और कुछ मैं अपने लिए भी तो सोच सकता हूँ ना, लेकिन इन्वेस्ट कहाँ करूँ? सिंपल है, एनपीएस में। एनपीएस में? रिया, अभी तो मैंने कमाना शुरू किया है, इतना आगे के लिए अभी से क्यों पैसे जोड़ूं? वो देखो, एक एक करके ईंट जोड़ी जाती है, तब जाके एक घर तैयार होता है। वैसे ही अभी से पैसे जोड़कर हम भी अपना रिटायरमेंट सुखी बना सकते हैं। बात में तो दम है। एनपीएस कम लागत वाली फ्लेक्सिबल लॉन्ग टर्म योजना है, जिससे आपकी बचत ग्रो होकर पेंशन का लाभ देती है। अच्छा, फिर तो मैं अभी अपना एनपीएस अकाउंट ओपन करता हूँ। जो कल की सोचते हैं वो आज से ही थोड़ा थोड़ा जोड़ते हैं। पेंशन है तो टेंशन नहीं। एनपीएस में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। Volkswagen Tygoon, India's safest SUVW. Volkswagen. बस बॉल। खट्टे मीठे घूट कटक के ले तू दिल को ठूस। Just let loose. Limonata. Just let loose. It's 11 a.m. and here are the headlines. Pakistan Foreign Minister Bilawal Bhutto insults Prime Minister Narendra Modi. Protests continue over Bilawal's remark across the country. Death toll in Bihar Hooch tragedy rises to 70, yet Chief Minister Nitish Kumar says no sympathy for the people who consumed the liquor. Home Minister Amit Shah in West Bengal for Eastern Zonal Council meeting. Mamata Banerjee and other chief ministers to attend. Shraddha's killer Aftab seeks bail. Aftab's bail plea in the court begins. Over 70 missiles fired at Ukraine. The nation faces mega power outage. And cutting across now, viewers, to some live visuals that we're picking up once again from Mumbai, where the protest, in fact, by the BJP workers, in fact, is still carrying out against Bilawal Bhutto over the kind of statements that he had made against the Prime Minister, and to which the BJP had responded and stated that they will be carrying out these kind of protests from across the country in various state capitals across the states. These kind of protests are seen today, and we had seen those visuals from Jammu also arriving, and now we are looking at those visuals from Mumbai. Let me also bring in my colleague Sandeep, who's right there at the protest site as well. Sandeep, it's over to you. Tell our viewers about the kind of protest that is being carried out there. Speak to some workers to understand how there really is an anger against the kind of statements that Bilawal Bhutto had made against the Prime Minister specifically, and how the workers are also saying that these were personal remarks that were made against the Prime Minister.
See, definitely very low level of statements been given by Pakistan, especially Bilawal Bhutto, and in fact you can see the pictures of Bilawal Bhutto. He has been given an image of a pig, and in fact women are out here. We'll try to get their reaction. बिलावल भुट्टो का जो स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के कहीं ना कहीं अपमानजनक बराबर है। देश के हमारे पंतप्रधान मोदी जी सबके लिए लड़ रहे हैं और उनका अपमान हमारा अपमान है, हमारे देश का अपमान है। और जो हमारे हिंदू सम्राट बाला साहेब ठाकरे रहते तो आज इनके किसी की मजा नहीं होती थी। आज ये सब एक साथ रहे हैं और हमारा साधु संतों का जो अपमान कर रहे हैं उसके विरोध में So Bharatiya Janata Party is protesting out here, and they have clearly mentioned that they won't tolerate the statement given by in fact Bilawal Bhutto, and you can see heavy crowd, huge crowd is out here and are in fact protesting against Bilawal Bhutto. Bilawal Bhutto का कहीं ना कहीं स्टेटमेंट जो है वो कहीं ना कहीं बर्दाश्त के बाहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान जो है उन्होंने अपने स्टेटमेंट द्वारा किया है। उनकी औकात नहीं है हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में बोले, जो पूरे देश में नहीं, भारत देश में नहीं, पूरे इस पे राज करता है। उसकी औकात क्या है जो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी के बारे में बताए। So you just heard the statement. We'll speak to few more party workers. बिलावल भुट्टो का जो स्टेटमेंट है, पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनका बयान आया है कि गुजरात का कसाई हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है, कहीं ना कहीं बर्दाश्त के बाहर है और कहीं ना कहीं यही कारण है कि आज भारी संख्या में आप लोग उतरे हैं। आज पूरे भारत देश में भारतीय जनता पार्टी पूरे पाकिस्तान के खिलाफ, भुट्टो के खिलाफ एक बड़ा विशाल आंदोलन कर रही है। वो भारत पाकिस्तान को जगाना चाहती है, बताना भी चाहती है पाकिस्तान ऐसी गलतियां न करे, जन जन तक उसके खिलाफ हो जाएं। अभी कुछ लोग उसकी तरफ हैं, ऐसा ना हो कि सारे लोग उसके खिलाफ हो जाएं। You just heard that Pakistan has been left nowhere in the world, and making such statement on the international level, this will corner Pakistan at one end, and in fact you can see heavy protest has been called out here at Dadar, and in fact massive crowd have gathered out here, and this is not just happening in Mumbai, but nationwide protest has been called by in fact Bharatiya Janata Party, and heavy security is also deployed by Mumbai police to make sure that nothing goes wrong in the city. And in fact there you see my video journalist Neeraj is showing you, there you see the Bilawal Bhutto banners, posters, Bilawal Bhutto's banners, posters is being slapped. His banner posters are being teared out here. He's been slapped. His posters are being slapped by shoes. So definitely this is the kind of anger of Bharatiya Janata Party after Bilawal Bhutto made such a low level of statement against Prime Minister Narendra Modi. Sandeep, stay on with us, and also I implore you to keep panning your cameras, because these are quite dramatic images that we are also seeing from Mumbai, where this protest is also being carried out. I implore you to keep panning your cameras and keep getting us more voices on the ground as far as what do they think of the statements that had been made by the Foreign Minister of Pakistan, and what are their really thoughts of the kind of statements that had been made targeting the Prime Minister as well, Sandeep. Yes, definitely will bring more and more voices. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर इतनी घटिया किस्म का स्टेटमेंट जो है वो बिलावल भुट्टो ने दिया है। आपका क्या सोच है? आज आप भारी प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे। हमारे नमस्कार, जय महाराष्ट्र, जय हिंद। मैं वार्ड अध्यक्ष मोहम्मद हसन, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी सेल का वार्ड अध्यक्ष हूँ और वार्ड 206 से मेरा। आप बताएं कि प्रधानमंत्री के ऊपर जो स्टेटमेंट किया गया है उसको लेकर के आपकी प्रतिक्रिया क्या है?
बहुत गलत है हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब ने जो इस देश के लिए किए, भारत के लिए एक भारत एक संविधान, जैसे हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर साहब का जो संविधान था उसके खिलाफ में जो संजय राउत ने स्टेटमेंट दिए, उन लोगों को तो माफ़ी मांगना ही चाहिए। और जो पाकिस्तान के मंत्री है, ये सब एक मंत्री गांधी जी के 3 बंदर है, ये गांधी जी के 3 बंदरों को माफ़ी मांगना चाहिए और पाकिस्तान को पाकिस्तान की औकात दिखाना चाहिए हमको। कहीं ना कहीं जो बात कांग्रेस पार्टी कई सालों से कहना चाह रही थी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, कहीं ना कहीं पाकिस्तान के मंत्री ने कही, आपको लगता है ऐसा? कांग्रेस पार्टी जो बात कहना चाहती थी, प्रधानमंत्री को बदनाम करना चाहती थी, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि पाकिस्तान के मंत्री का स्टेटमेंट कांग्रेस पार्टी का हिडन एजेंडा है? हिडन एजेंडा ही है और ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा ही बुलवाया गया है। आप देखिए हमारे सैनिकों ने कितने मार के भगाया, वीडियो वायरल हो रहा है, फिर भी वो कहते हैं कि हमारे सैनिक मार खाएं। ऐसे तत्ववादी जो कांग्रेसी हैं देश को बदनाम करने पे तुले हुए हैं। देश को जो नाम मोदी जी का आज इंटरनेशनल लीडरशिप में आ गया है उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप बताएं, बिलावल भुट्टो का स्टेटमेंट जो है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना एक कसाई से कर देना अनुचित है? पाकिस्तान का हर छोटा से छोटा कार्यकर्ता या बड़ा से बड़ा नेता को कोई पूछता नहीं है, इसलिए उनका पहला टारगेट होता है कि हम कम से कम मोदी जी का नाम लेके मीडिया में चलें और लोगों इस तरह के देखें। इनका और कोई वजूद नहीं है, सिर्फ मोदी जी के ऊपर पाकिस्तान के लोग खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान का मंत्री नहीं, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री अगर मोदी जी होंगे तो पाकिस्तान का भला हो जाएगा, ये लोग वहाँ के चाहते हैं। आप बताएं कि जिस प्रकार का स्टेटमेंट दिया गया है अनुचित है? उचित नहीं, ये एकदम अनुचित है। गधा बेच करके पाकिस्तान में नमक रोटी खाने वाला देश वो इंडिया की तुलना कर रहा है, मीडिया में आने के लिए, देश में आने के लिए हर पूरे विश्व में रो रहा है कि हम कंगाल हो गए हैं, भूखा मर रहे हैं। ऐसे लोग पाकिस्तान देश की, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विषय में बोलता है, देश का प्रधानमंत्री हिंदुस्तान का। आपको लगता है कि पाकिस्तान को अपने इकोनॉमी पे काम करना चाहिए, ना कि भारतीय प्रधानमंत्री के बारे में टिप्पणी करनी चाहिए? पाकिस्तान को अपने पूरे देश के प्रति काम करना चाहिए। इकोनॉमी उनको जीडीपी का मुझे लगता है पता ही नहीं होगा विदेश मंत्री को, तो अपनी इकोनॉमी पे काम करें, अपने लोगों के लिए काम करें, ना कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को कुछ बोले। So you just heard the reactions, and in fact, I would request my video journalist Neeraj to show you the visuals. The heavy crowd has gathered, in fact, out here at Dadar, and we got several reactions from the Bharatiya Janata Party, workers, and they have mentioned their anger over the statement. And in fact, a few of the workers also mentioned that this is the hidden agenda of Congress Party. The kind of statement that was made by Bilawal Bhutto, they also blame Congress Party for this. They say that this is the statement that Congress Party wanted to give from long time, but it is now Bilawal Bhutto who had given such a low level of statement against the Prime Minister of India. And in fact, this cannot be tolerated, and for the same reason, in fact, the party workers, the BJP workers are in fact protesting. A massive protest has been called out here at Dadar, and they are in a mood to not to tolerate the statement given by the Foreign Minister of Pakistan, Bilawal Bhutto. Yes, Sandeep, their viewers getting us the voices, the latest as far as this entire controversy is concerned, where the Foreign Minister Bilawal Bhutto's statements in fact have been taken offense to, and the BJP had stated that they will be carrying out these kind of protests across the country in all of the states, in the state capital as well. And those are the images that we had just seen from Bombay as well. Cutting across now to another huge development that we are getting as far as the Tawang controversy is also concerned, where the Defence Minister Rajnath Singh in fact has made a huge statement, and he has stated that whether it's Galwan or Tawang, our defence forces have proved their bravery and valour. Now this of course is a huge statement by the Defence Minister Rajnath Singh, as he is speaking about Tawang, and has also made a reference to the Galwan Valley, and of course has also stated that be it either Galwan or Tawang, that our defence forces have proved their bravery and valour. And we also see how
there were several voices imploring for the government to come out and give a statement on this. And of course, we have also seen how Rahul Gandhi himself had also been dragged in this entire controversy. He himself had also insulted our forces, and now we see that in the latest, as far as the Tawang is concerned, where the Defence Minister Rajnath Singh has come out and made a huge statement in support of the Defence Forces and has stated that then be it Galwan or Tawang, our Defence Forces have proved their bravery and valour time and time again. And of course, viewers, we had seen that undated video that we're also putting out on your screens right now, where we had seen the Indian Jawans really fighting against the enemy army as well. And of course, now we see that Rajnath Singh has also come out and defended and has stood by the troops and has stated that then be it Galwan or then be it Tawang, our forces are standing strong and they in fact fight with bravery and valor as well. We have various voices, viewers, that are coming in on this big story that we're tracking for you. We also have Major Gaurav Arya, who's joining me on the broadcast right now. Major Gaurav Arya, how do you really see Defence Minister Rajnath Singh's statement, where he has now come out and stated that be it Galwan or be it Tawang, our defence forces have proved their bravery and valour time and time again? No, this is nothing to be stated. We know the defence forces have been proving their valour ever since they were created. So there is, I don't say anything new in the statement or anything fresh that needs to be quoted or needs to be celebrated. That is what the armed forces are there for, and that is what they will do. They will do that 1,000 times over, because that is why they have been created. That is the mindset, that is the professionalism, that is the courage, that is the DNA of the Indian Army and the other armed forces, Navy, Air Force also. So there is nothing surprising. It's a matter of fact statement, and I think people should stop doing politics over it. That's it. But we do see, we do see that there is politics that is being fought over this. We do see how the statements that were coming out from Rahul Gandhi as well. We see the kind of statements that are coming in from the opposition, trying to politicize the entire Tawang incident as well. Speak to us a little bit about that, because as you say that there is no politics to be done over these kind of statements by Rajnath Singh, but the opposition continues to do so. See, the soldier at the border is not interested in what the opposition is saying. He's only interested in where the enemy is and what his senior officer is saying. So it does not impact us at all. That is number one. Number two, all these statements made by politicians, is all for benefit. They hope. All right, Major Gaurav Arya, sorry to cut you short there. I'm only just short of time. We're cutting across to a press conference by Gaurav Bhatia as well. जो जवान पर चीन की सेना को डटकर पीट रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं कि हमारी सेना और हमारे देश की ताकत क्या है, तो भारत के जयचंद राहुल गांधी हमारी वीर सेना का मनोबल तोड़ने का काम क्यों कर रहे हैं? राहुल गांधी जी, एक बात और याद रखिएगा, ये वो भारत है जिसके पीछे एक वीर सेना है, एक मजबूत सशक्त राजनीतिक नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी जी का है, 135 करोड़ भारतीयों की ताकत है। ये 1962 वाला भारत नहीं है, ये बात आप याद रखिए। और इस मंच से मैं पुनः एक बात दोहराना चाहूंगा, क्योंकि राहुल गांधी जैसे जो जयचंद हैं, उनके लिए ये बहुत आवश्यक है। पिछले 8.5 साल में भारत की 1 इंच भूमि
किसी ने ना कब्जाई है और ना किसी में यह हिम्मत है कि श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा मजबूत नेतृत्व हमारे पास हो, विश्व की सबसे वीर सेना हमारे पास हो, कूटनीतिक तौर पर पूरे विश्व को हम दिशा दे रहे हो और भारत की 1 इंच भूमि कोई कब्जा ले, यह संभव नहीं है, असंभव है। यह कहने के बाद मैं एक बात पे खासा जोर डालूंगा। जब जब हमारी वीर सेना अपना शौर्य, अपना पराक्रम दिखाती है, तो ऐसा क्यों है कि भारतीयों की छाती 56 इंच की हो जाती है, लेकिन दर्द होता है तो हमारे दुश्मन देश को और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को। क्यों आपकी छाती 6 इंच की हो जाती है राहुल गांधी जी, जब देश के नागरिकों की छाती 56 इंच की हो जाती है? क्या यह पहली बार हुआ है? सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, करारा जवाब हमारी वीर सेना ने दिया। यही राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बोली, कोई प्रमाण तो दो सेना, कैसे मान ले? बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, घुस के ठोका पाकिस्तान को। यही राहुल गांधी और कांग्रेस बोली, कोई आतंकवादी नहीं मरा है, पेड़ पे कौए बैठे थे वो मरे हैं। और आज फिर से पुनः जब देश की सेना ने स्पष्ट कर दिया, संख्या में चीनी सैनिक ज्यादा, लेकिन मनोबल हमारी सेना का ऊंचा। बताते हैं 300 के आसपास वो थे, संख्या हमारी कम हो सकती है। दौड़ाया वहां से, डर के भागे, ये ताकत है हमारी सेना की। और आप कहते हैं कि हमारे जवान पिट रहे हैं राहुल गांधी। भारत की जीत में आपको दर्द होता है, ऐसा क्यों है? और आपको यह बताना भी आवश्यक है किस तरह से बार बार यह कार्य किया जाता है। इसीलिए आवश्यकता पड़ी कि देश के सामने सच्चाई रखें और राहुल गांधी का ये जो जयचंद वाला चरित्र है उसको उजागर किया जाए। गलवान में चीनी सेना ने जब प्रयास किया कि वो भारत की सीमा पे घुसे, नहीं भूलना चाहिए कर्नल संतोष बाबू और 19 और जवान जिन्होंने शहादत दी। लेकिन राहुल गांधी का एक ट्वीट है, सरेंडर मोदी। सुन लो राहुल गांधी, देश भारत के 135 करोड़ नागरिक, भारत की वीर सेना और भारत का प्रधानमंत्री एक हैं और कभी समर्पण नहीं करेंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि राहुल गांधी बार बार इस तरह के वक्तव्य इसलिए देते हैं कि हमारी वीर सेना का मनोबल टूटे, भारत को नीचा
दिखाने का प्रयास होता है। और ये उनका एक और ट्वीट है। वो कहते हैं, गद्दारों ने भारत माता को चीरकर एक टुकड़ा चीन को दे दिया। तो जैसा मैंने बताया, राहुल गांधी जी जब से श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी की हिम्मत नहीं है, हैसियत नहीं है, औकात नहीं है कि 1 इंच भूमि भी भारत की कब्जा सके। लेकिन एक पार्लियामेंट प्रोसीडिंग का हिस्सा जरूर लेके आया हूं। और क्योंकि मीडिया चौथा स्तंभ है, यह राहुल गांधी को दिखा के पूछना चाहिए। इसमें 21 नवंबर 2007 को एक प्रश्न पूछा गया कि भारत की जो भूमि है उस पे चीन का कब्जा है। तो ये कांग्रेस की सरकार थी और उन्होंने कहा 38,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन ये कांग्रेस शासन में चीन ने कब्जाई और इसके बाद 5,180 स्क्वायर किलोमीटर और 1963 में कब्जाई गई। कुल मिला के 43,180 स्क्वायर किलोमीटर जमीन ये कांग्रेस शासन में गई। लेकिन ये आप भूल गए। दूसरी बात जो आज बार बार उठनी चाहिए, पूछा जाना चाहिए, क्योंकि यही सही वक्त है जब कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को जवाब देश को देना होगा। मेरे हाथ में यह तस्वीर है। यह तस्वीर इसलिए दिखा रहा हूं, इस तस्वीर में देश से गद्दारी कौन कर रहा है दिखाई दे रहा है। कांग्रेस की सरकार थी, भारत का हित नहीं देख रहे थे। राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी एक पार्टी टू पार्टी समझौता करते हैं और आज ये एक चिंता का विषय है राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी। यह समझौता आपने आज तक सार्वजनिक क्यों नहीं किया है? ऐसा प्रतीत होता है कि यह समझौता सार्वजनिक इसलिए नहीं हुआ है, और अगर यह समझौता अभी भी सार्वजनिक नहीं होता तो कांग्रेस पार्टी देश से गद्दारी कर रही है। राहुल गांधी ने गद्दारी की है और यह प्रतीत हो रहा है कि समझौते में यह स्पष्ट लिखा है, जब जब देश की सेना अपनी वीरता दिखाएगी तो उसका मनोबल तोड़ने का काम कांग्रेस पार्टी और उसके नेता करेंगे। हमारे देश के वीर सैनिक भारत माता की भूमि से बंधे हैं और राहुल गांधी और गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी इस समझौते से बंधी है। और यह भी प्रतीत होता है कि इस समझौते में यह स्पष्ट होगा कि कांग्रेस पार्टी कभी चीन की निंदा नहीं करेगी, आलोचना करेगी देश के चुने हुए प्रधानमंत्री की, सेना के चीफ को सड़क का गुंडा बुलाएगी, सर्जिकल स्ट्राइक का प्रमाण मांगेगी, बालाकोट एयर स्ट्राइक में कौवे मरे हैं कहेगी, लेकिन चीन की निंदा नहीं करेगी। वो वक्तव्य मैं ढूंढता रहा, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कभी चीन की निंदा करी हो, राहुल गांधी ने एक शब्द कहा हो, खड़गे जी ने कभी एक शब्द कहा हो, वो मिल नहीं पाया। लेकिन हां, यह कहते हुए राहुल गांधी को बड़ा गर्व होता है कि समझौता जो मैंने चीन से किया
उसका पालन करते हुए मैंने भारत की वीर सेना के लिए कहा, हमारे जवान पिट रहे हैं। एक बात उठो, जागो, दौड़ो तुम, डायबिटीज को रोको तुम। Get Bhutto's Diabetes Care Program with a free glucometer and expert advice. Give a missed call on 740 1100. Volkswagen Tiguan, India's safest SUVW. Volkswagen. मजबूती डाली रूट्स में बिखरा सबूत रे, दूध से बना दूध रे, शुरू हुआ सब दूध से, बना दिया अटूट रे, बिखरा सबूत रे, दूध से बना दूध रे, शुरू हुआ सब दूध से, शुरू हुआ सब दूध से। क्या हुआ रोहन, क्या सोच रहा है? रिया, पहली सैलरी मिली है, तुम भी कुछ आइडिया दो, एक्सपेंसेस को कैसे प्लान किया जाए। रोहन, एक्सपेंसेस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट प्लान करना भी जरूरी है। देखो, सैलरी का कुछ हिस्सा घर के रेगुलर खर्चे के लिए और कुछ मैं अपने लिए भी तो सोच सकता हूँ ना, लेकिन इन्वेस्ट कहाँ करूँ? सिंपल है, एनपीएस में। एनपीएस में? रिया, अभी तो मैंने कमाना शुरू किया है, इतना आगे के लिए अभी से क्यों पैसे जोड़ूं? वो देखो, एक एक करके ईंट जोड़ी जाती है, तब जाके एक घर तैयार होता है। वैसे ही अभी से पैसे जोड़कर हम भी अपना रिटायरमेंट सुखी बना सकते हैं। बात में तो दम है। एनपीएस कम लागत वाली फ्लेक्सिबल लॉन्ग टर्म योजना है, जिससे आपकी बचत ग्रो होकर पेंशन का लाभ देती है। अच्छा, फिर तो मैं अभी अपना एनपीएस अकाउंट ओपन करता हूँ। जो कल की सोचते हैं वो आज से ही थोड़ा थोड़ा जोड़ते हैं। पेंशन है तो टेंशन नहीं। एनपीएस में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। अरे आप इतनी दूर हमारे लिए? आपकी मेहनत कहां से कहां पहुंच रही है। मैं आपके एक साइन के लिए यहाँ नहीं आ सकता? हो गया आपका अकाउंट ओपन। हर बंद राह ओपन हो सकती है, लगता है सिर्फ दिल। धन्यवाद। एक्सिस बैंक, दिल से ओपन। बैंगन भरते का सारा सामान ऑर्डर कर दिया, बैंगन ही ऑर्डर करना भूल गया। बैंगन भी ऑर्डर कर दूं? सिर्फ एक बैंगन देने कौन आएगा? जियो मार्ट, सिर्फ एक आइटम भी फ्री डिलीवर करता है। छोटा या बहुत छोटा, जियो मार्ट करता है हर ऑर्डर फ्री होम डिलीवर। जियो मार्ट, हर घर का मार्ट। पूछे जाने पर कि भाई चीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, भारत क्या कर रहा है? मैं पढ़ना चाहूंगा 6 सितंबर 2013 को क्या नीति थी कांग्रेस पार्टी की। कहा गया एके एंटनी जी द्वारा, द इंडिपेंडेंट इंडिया हैड अ पॉलिसी फॉर मेनी इयर्स दैट द बेस्ट डिफेंस इज नॉट टू डेवलप द बॉर्डर, undeveloped borders are safer than developed borders. ये इनकी नीति थी कि सरहद पे कुछ बनाओ नहीं, देश सुरक्षित रहेगा। श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, बदलाव क्या आया? डीएसडीबीओ ब्रिज, दुर्बक से दौलत बेग ओल्डी तक का 323 किलोमीटर का यह ब्रिज बनकर तैयार हो गया, जो कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई। आप सब जानते हैं, भारत की वायु सेना को लड़ाकू विमान चाहिए थे। 10 साल सत्ता में ये रहे, राफेल नहीं आया। क्यों नहीं आया? कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार बिना कमीशन लिए कोई काम करता ही नहीं है। 2013 के अंत में 14 में एके एंटनी जी बोले,
रुपया नहीं है ये इस वित्त वर्ष में। आज जब लड़ाकू विमान राफेल सरहद पर गड़गड़ाता है तो चीन को पता चलता है कि भारत की सेना कितनी मजबूत है। एक इच्छा शक्ति है, एक स्पष्ट नीति। आज चिनूक, अपाचे, ये हेलीकॉप्टर आए हैं। हमारी सैन्य क्षमता में वृद्धि हुई है। आईएनएस विक्रांत, ये नया भारत है, मोदी जी के नेतृत्व वाला भारत है। अपना पराक्रम, अपना शौर्य हमारी सेना दिखा रही है और उनके साथ सरकार खड़ी है, हर नागरिक खड़ा है। एक बात और स्पष्ट बताना बड़ा आवश्यक है। हमारे सैनिक कांग्रेस की सरकार में मांग करते रहे, हमें बुलेट प्रूफ जैकेट दे दो। और जिन सैनिकों के लिए आज राहुल गांधी ने कहा कि वो पिट गए हैं, हमारी वीर सेना वो सेना है जिसको बुलेट प्रूफ जैकेट आपने नहीं दी, लेकिन वीवीआईपी चॉपर आप अपने लिए ला रहे थे। और वो सैनिक कहता था, भारत माता के लिए मैं अपनी जान दे दूंगा, शहीद हो जाऊंगा, आप बुलेट प्रूफ जैकेट दें या ना दें। और आज ये गर्व की बात है, 1,86,000 बुलेट प्रूफ जैकेट जो कांग्रेस के समय में हमारा सैनिक मांगता रहा और नहीं आई, क्योंकि इनकी प्राथमिकता वीवीआईपी चॉपर थे, बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं सैनिकों के लिए। आज वो बुलेट प्रूफ जैकेट कोई लाया है तो श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार लाई है। ये सोच का फर्क है। आपके समक्ष ये बात जो रखी है, तथ्यों के आधार पे पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग और तस्वीर दिखा के मैंने रखी। और इसलिए यह आवश्यक है क्योंकि हर भारतीय नागरिक का खून खौलता है जब इस तरह के वक्तव्य राहुल गांधी द्वारा दिए जाते हैं। यह मांग इस मंच से हम लोग करते हैं कि राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। यह पाप ऐसा है कि माफी मांगने से भी नहीं धुलेगा, लेकिन माफी मांगेंगे तो कम से कम यह पता चलेगा कि उन्हें अपनी गलती का एहसास है। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी जी थी। एक मां पुत्र से ज्यादा प्यार करे, देश से कम नहीं कार्रवाई कर सकती थी। लेकिन अगर आज कांग्रेस पार्टी देश के साथ खड़ी है, खड़गे जी अध्यक्ष हैं और रिमोट कंट्रोल से नहीं चलाए जाते, तो राहुल गांधी को तुरंत कांग्रेस पार्टी से निष्कासित करें। मल्लिकार्जुन खड़गे जी पार्टी के अध्यक्ष आप हैं। भारत की विपक्षी पार्टी आप हैं। आपकी क्या मजबूरी है कि राहुल गांधी को आप पार्टी से निष्कासित नहीं कर सकते? इस बयान के लिए जो भारत को नीचा दिखाता है, जो हमारी सेना का मनोबल तोड़ता है। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो यह माना जाएगा कि यह राहुल गांधी का केवल बयान नहीं है, यह कांग्रेस पार्टी की सोच है। और कांग्रेस पार्टी, हम सब जानते हैं, आज एक राजनीतिक दल कम है और भारत विरोधी गतिविधियों का अड्डा ज्यादा है।
ये कह के मैं अपनी बात को विराम दूंगा। कोई प्रश्न हो तो पूछे जा सकते हैं। धन्यवाद। एक एक करके प्लीज। देखिए, बिल्कुल स्पष्ट एक बात कर दूं, भारत की सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेना को खुली छूट देती है। जो उचित कार्रवाई हो वो कार्रवाई की जाएगी। और भारत की सेना पूरे विश्व में सबसे वीर सेना है। एक मजबूत नेतृत्व, एक वीर सेना, यह सुनिश्चित करती है कि भारत को किसी से कभी कोई खतरा ना हो। लेकिन डोकलाम की क्योंकि आपने बात करी, मैं इतना जरूर कहूंगा, डोकलाम में भी जब भारत की सेना मजबूती से करारा जवाब दे रही थी चीनी सेना को, तब हक्का नूडल्स कौन खा रहा था? टेंट के नीचे छुप छुप के। सब जानते हैं। इसीलिए मैंने कहा यह राजनीतिक दल कम है, भारत विरोधी गतिविधियों का अड्डा ज्यादा है। आत्मचिंतन की आवश्यकता है कांग्रेस पार्टी को। देखिए, ऐसा है कि भारत के नागरिकों को भारत के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री पे पूरा पूरा भरोसा है। लेकिन जैसा मैंने कहा, 1,35,00,000 रुपए जिस पार्टी ने रिश्वत ली हो, जिसने एक MOU पार्टी टू पार्टी साइन किया हो, ना वो अपने प्रधानमंत्री पर, ना देश की जनता पर और ना वीर सेना पर भरोसा करेगी। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, Your favorite service provider, 10, which gets you the best of entertainment, is back with something very special. अभी मजा आएगा ना भिड़ो। Your 3 favorite movie channels are bringing in super blockbuster films with features like wider picture and crystal clear sound straight to your home. Wow. Oh, I love that expression. To subscribe to your favorite channels, contact your local cable TV operator today or call 10 toll-free number 1-800-419-2020 now. मजबूती डाली रूट्स में बिखरा सबूत रे, दूध से बना दूध रे, शुरू हुआ सब दूध से, बना दिया अटूट रे, बिखरा सबूत रे, दूध से बना दूध रे, शुरू हुआ सब दूध से, शुरू हुआ सब दूध से। आइए नए उत्तर प्रदेश की क्षमता और असीमित अवसरों से सफलता की नई कहानी लिखें। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 10 से 12 फरवरी 2023। नए भारत के ग्रोथ इंजन उत्तर प्रदेश में निवेश करें। कुछ मेरा, कुछ तुम्हारा। इसलिए ग्रीन लैम लैमिनेट्स, सपने आपके, लैमिनेट्स हमारा। अमेजिंग स्पेसेस के लिए कुछ मेरा, कुछ तुम्हारा।
जाग उठा एक राष्ट्र करने हर चुनौती का सामना, मातृभूमि की करने रक्षा उठा एक महायुद्ध। भारतवर्ष के अमर शूरवीरों में एक अध्याय, एक संग्राम और उसके नायक ब्रह्मपुत्र के शूरवीर लासित बोरफुकन। Thank you for staying tuned. And amid the BJP escalating that attack against Rahul Gandhi, Defence Minister Rajnath Singh has made a big statement. He said whether it is Galwan or it is Tawang, our defence forces have proved their bravery and valour. Listen into that statement in detail. विरासत को सुरक्षित कल पे हमारा कन्विक्शन है। चाहे काशी विश्वनाथ का प्रश्न हो, चाहे हमारे महाकाल उज्जैन का हो, बद्रीनाथ का हो, केदारनाथ का हो, सोमनाथ का हो, इनको भव्य स्वरूप प्रदान करना यह कोई अपराध हम लोगों ने नहीं किया है। भारत के किसी कौम के साथ कोई हमने डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है। यह तो भारत की विरासत है। भारत की विरासत को सुरक्षित रखना क्या यह अपराध है? इसको भी लेकर बहस की जाती है। और अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे सैकड़ों कानूनों को समाप्त कर दिया हम लोगों ने, जो पुराने पड़ गए थे, जिनका कोई अब रेलेवेंस नहीं रह गया था। और लगभग 1500 से अधिक कानूनों को समाप्त कर दिया। अभी कल की कैबिनेट में लगभग कई ऐसे एक्ट्स थे जो पुराने थे, जिनका की कोई रेलेवेंस अब रही नहीं गया था, उनको भी समाप्त कर दिया है। छोटे छोटे मामलों में उठाकर जेल में बंद कर देना। अब आप जानते हो कि छोटी छोटी चीजों में इसका कोई औचित्य नहीं है। अब एक सिलसिला इसमें सेना के बारे में भी चला है, थोड़ा सा हटकर बातें उससे मैं कर रहा हूं। लेकिन मित्रों, मैं संसद में कह चुका हूं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, नहीं तो वह बातें नहीं बोलूंगा जो कि मैंने संसद में नहीं कही हैं। चाहे गलवान हो तो तवांग, हमारी सेना ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि हमने भी कभी किसी अपोजिशन के लीडर के इंटेंशन पर कभी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है। पॉलिसीज को लेकर हमने डिबेट किया है। राजनीति सच बोलकर ही की जाती है, झूठ बोलकर लंबे समय तक राजनीति नहीं की जा सकती। राजनीति यह दो शब्दों को मिलाकर बना हुआ है, राज और नीति। और नीति यह संस्कृत के नए धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ले जाना, टू कैरी आउट। वह पॉलिटिकल सिस्टम जो समाज को सही रास्ते पर आगे ले जाने का काम करे, उसे ही हम राजनीति कहते हैं। With that, it's time for us to slip into a short commercial break. On the other side, Home Minister Amit Shah is in West Bengal for Eastern Zonal Council meet. Mamata Banerjee and other chief ministers are also to be in attendance. We'll get you details after this short breather. Stay with us. अगर मिठाई जंक फूड से है यारी,
तो डायबिटीज की कर लो तैयारी। Get Bhutto's diabetes care program with a free glucometer and expert advice. Give a missed call on 740 1100. Hey boss, Rahul, how come you're here? शाहरुख ने बताया। Guys, just 1 second. Choosing a car for my mom. What? Online car shopping? Wow, that's so cool, yeah. शाहरुख ने बताया। मैंने? Wait up. Booking a car service. Booking a service from here. क्यों? तुझे शाहरुख ने नहीं बताया? इसने पूछा ही नहीं। Charging station for my electric car. Ah, found it. Really? How? शाहरुख ने बताया। There's so much more जो शाहरुख ने नहीं बताया. It's all on the industry first My Hyundai app. Open a world of possibility with My Hyundai app. One app, many worlds. Darling, you don't even have a Hyundai. Honey, that's exactly what I'm doing. Buying one. क्योंकि शाहरुख ने बताया. ये है गेहूं। जब इसमें जुड़ता है रागी, जवार, बाजरा और मेथी तो बनता है हेल्दी मन्ना मल्टी मिलेट आटा। ये है बेहतर आटा। क्या हुआ रोहन, क्या सोच रहा है? रिया, पहली सैलरी मिली है, तुम भी कुछ आइडिया दो, एक्सपेंसेस को कैसे प्लान किया जाए। रोहन, एक्सपेंसेस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट प्लान करना भी जरूरी है। देखो, सैलरी का कुछ हिस्सा करके रेगुलर खर्चे के लिए और कुछ मैं अपने लिए भी तो सोच सकता हूँ ना, लेकिन इन्वेस्ट कहाँ करूँ? सिंपल है, एनपीएस में। एनपीएस में? रिया, अभी तो मैंने कमाना शुरू किया है, इतना आगे के लिए अभी से क्यों पैसे जोड़ूं? वो देखो, एक एक करके ईंट जोड़ी जाती है, तब जाके एक घर तैयार होता है। वैसे ही अभी से पैसे जोड़कर हम भी अपना रिटायरमेंट सुखी बना सकते हैं। बात में तो दम है। एनपीएस कम लागत वाली फ्लेक्सिबल लॉन्ग टर्म योजना है, जिससे आपकी बचत ग्रो होकर पेंशन का लाभ देती है। अच्छा, फिर तो मैं अभी अपना एनपीएस अकाउंट ओपन करता हूँ। जो कल की सोचते हैं वो आज से ही थोड़ा थोड़ा जोड़ते हैं। पेंशन है तो टेंशन नहीं। एनपीएस में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। India welcomes those who further India's pride across the globe. Indian diaspora, partners of New India's growth journey in Amrit Kaal. Come and be a part of the 17th Pravasi Bharati Divas from 8th to 10th January 2023 at Indore, Madhya Pradesh, India. For registration, log on to pbdindia.gov.in. The teacher who attacked a 5th class girl with scissor and pushed off from the first floor has been suspended with immediate effect. Meanwhile, MCD will bear all the expenditure on the medical treatment of the student. A combined graduation parade was held at the Air Force Academy in Dundigal in Hyderabad to mark the successful completion of pre-commissioning training of flight cadets of various branches of the Indian Air Force. Apex child rights body NCPCR has summoned EdTech Byju's CEO over allegations that it is indulging in malpractices to lure parents and children to buy their courses. Now, according to sources, Byju's is facing a range of complaints on social media platforms and consumer websites, with customers alleging that they were exploited and deceived. We are stepping into a very short commercial break. On the other side, we are keeping a close eye on Amit Shah's visit to West Bengal. He is there for the Eastern Zonal Council meet, where several chief ministers are present.
5 lakhs. लोन चाहिए तो पैसाबाजार.com पर जाइए। लोन सही मिलेगा यहीं। क्या हुआ रोहन, क्या सोच रहा है? रिया, पहली सैलरी मिली है, तुम भी कुछ आइडिया दो, एक्सपेंसेस को कैसे प्लान किया जाए। रोहन, एक्सपेंसेस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट प्लान करना भी जरूरी है। देखो, सैलरी का कुछ हिस्सा घर के रेगुलर खर्चे के लिए और कुछ मैं अपने लिए भी तो सोच सकता हूँ ना, लेकिन इन्वेस्ट कहाँ करूँ? सिंपल है, एनपीएस में। एनपीएस में? रिया, अभी तो मैंने कमाना शुरू किया है, इतना आगे के लिए अभी से क्यों पैसे जोड़ूं? वो देखो, एक एक करके ईंट जोड़ी जाती है, तब जाके एक घर तैयार होता है। वैसे ही अभी से पैसे जोड़कर हम भी अपना रिटायरमेंट सुखी बना सकते हैं। बात में तो दम है। एनपीएस कम लागत वाली फ्लेक्सिबल लॉन्ग टर्म योजना है, जिससे आपकी बचत ग्रो होकर पेंशन का लाभ देती है। अच्छा, फिर तो मैं अभी अपना एनपीएस अकाउंट ओपन करता हूँ। जो कल की सोचते हैं वो आज से ही थोड़ा थोड़ा जोड़ते हैं। पेंशन है तो टेंशन नहीं। एनपीएस में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। Helps beat sensitivity fast. Sensodyne Rapid Relief. Hey Rahul, what's up? Hey, kicked about our first date? Of course. Benefits up to rupees 30,000 only at the Citroën C3 Carnival. Book today. उठो, जागो, दौड़ो तुम, डायबिटीज को रोको तुम। Get Bhutto's diabetes care program with a free glucometer and expert advice. Give a missed call on 740 1100. जाग उठा एक राष्ट्र करने हर चुनौती का सामना। मातृभूमि विनाश के कगार पर खड़ी है। ये घड़ी है करो या मरो की। एक अध्याय, एक संग्राम और उसके नायक ब्रह्मपुत्र के शूरवीर लासित बोरफुकन। यहाँ पे देख सकते हैं आप, पुतला जलाया जा रहा है यहाँ पे बिलावल भुट्टो का यहाँ पर, और साथ ही पाकिस्तानी झंडे को भी यहाँ पे रखा गया, उसको भी जलाया जा रहा है। जो यहाँ पे युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं भाजपा के, उनके द्वारा यहाँ पे साफ तौर पे यहाँ पे लाइव तस्वीरें आप देख बिल्कुल आप देख सकते हैं। यहाँ पे लाइव तस्वीरें, यहाँ पे आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं और यहाँ पे नारे भी लगाए जा रहे हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद के तमाम। यहाँ पे जो कार्यकर्ता है उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, और भी कार्यकर्ता यहाँ पे किस तरीके से देखते हैं बयान को लेकर के। हाय 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 हाय। देखिए, बिलावल भुट्टो का पुतला लाया गया, उसको भी जलाने की यहाँ पे तैयारी की जा रही है। साफ तौर पे आप तस्वीरें यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर लोगों में काफी रोष है, जो कार्यकर्ता है काफी रोष में है। पूरे देश में बिलावल भुट्टो के बयान को लेकर के यहाँ प्रोटेस्ट किया जा रहा है। ये जम्मू की लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिलावल भुट्टो का पुतला जलाया जा रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पे कार्यकर्ताओं में काफी रोष है, क्योंकि यहाँ पीएम मोदी का जो छवि है उसको कहीं ना कहीं धूमिल करने की कोशिश बिलावल भुट्टो के द्वारा किया जा रहा है। उसको लेकर के यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है, आप साफ तौर पे देख सकते हैं। हाय 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 पाकिस्तान। देखिए, बौखला गया है पाकिस्तान, जिस तरीके से बयानबाजी की जा रही है। कहीं ना कहीं बौखला गया पाकिस्तान, और कहीं ना कहीं डर है उसे कि जिस तरीके से चाइना
कुछ पैसे बोरो करने थे। लोन चाहिए तो पैसाबाजार.com पर जाइए। पैसाबाजार.com, लोन सही मिलेगा यहीं। A movement transforming millions of lives in rural Maharashtra. An initiative empowering communities to transform their own lives. A journey that is changing the face of rural India. A holistic area where we want to make impact across everything that affects people's life, with the holy grail being livelihood to sort of empower them. Catch the stories of aspiration on Swadesh Foundation's Swa Se Bane Desh at these times only on Republic TV. बैंगन भरते का सारा सामान ऑर्डर कर दिया, बैंगन ही ऑर्डर करना भूल गया। बैंगन भी ऑर्डर कर दूं? सिर्फ एक बैंगन देने कौन आएगा? जियो मार्ट सिर्फ एक आइटम भी फ्री डिलीवर करता है। छोटा या बहुत छोटा, जियो मार्ट करता है हर ऑर्डर फ्री होम डिलीवर। जियो मार्ट, हर घर का मार्ट। Volkswagen Tiguan, India's safest SUVW. Volkswagen. Tonight, a murder will be committed. If anyone can name the killer, that person wins our game. This is truly delightful. Holy There has been a murder. For one person, this is not a game. A killer wouldn't hesitate to kill again. You must be really great at clues. I'm very bad at dumb things. Glass Onion, a Knives Out mystery. Did you see the Chinese soldiers running away? Did you see the look of fear and confusion in their faces when they were confronted by Indian Army soldiers? When the Indian Army soldiers went on an attack, they ran away. This is what Chinese courage looks like. They run away when confronted by a more aggressive and superior force. Next time when the Chinese come, we must make sure none of them go back alive. चाहे गलवान हो तो तवांग, हमारी सेना ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। Industry leaders, the policy forces, he says, be it Galwan or Tawang, forces proved valor. ये 1962 वाला भारत नहीं है, ये बात आप याद रखिए। BJP ramps up the attack on Rahul Gandhi, says Rahul Gandhi and Congress must apologize. Pakistan Foreign Minister Bilawal Bhutto insults the Prime Minister Narendra Modi. Protests continue over Bilal's remark across the country. Death toll in the Bihar Hooch tragedy rises to 70, yet the Chief Minister Nitish Kumar says no sympathy. Home Minister Amit Shah in West Bengal for Eastern Zonal Council meet Mamata Banerjee and other chief ministers to attend. Thank you for staying with Republic viewers. Straight away cutting across to the breaking updates that we're picking up. Now this time the protest visuals that we had been seeing coming in
from across the country, the protest, in fact, that was being carried out against Bhutto, the foreign minister of Pakistan, and how the BJP, in fact, had come out and stated that these are personal remarks that are being made against the Prime Minister, and of course claiming that this is something that they have taken offense to, and that there will be massive protests across the country through the day in various capitals of the states that will be carried out. And one such protest is what we're looking at right now. Viewers, these are images coming in from Jammu, where we are seeing that the protesters, in fact, are continuing their protest with burning the effigies, marching around with the posters as well that have been made, condemning Pakistan, condemning the foreign minister, shaming Pakistan as well, claiming that the Pakistan, in fact, needs to introspect when it comes to the kind of terrorist activities that it procreates, but not just target the Prime Minister and personally target the Prime Minister as well, is something that the protesters had been stating. Viewers, our correspondents have been on the ground getting you these images and voices from across the protest, across the country as well. Let's take a look at this one report filed by my colleague Lomas there at the protest site. मैं आपको बता दूं कि अभी मैं जम्मू में मौजूद हूं और जम्मू में आप देख सकते हैं बिलावल भुट्टो ने जिस तरीके से बयान दिया है उसको लेकर के यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जो युवा मोर्चा के कर्मी हैं, जो कार्यकर्ता है, उनके द्वारा यहाँ पर गुस्सा निकाला जा रहा है। साफ तौर पे उनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो बिलावल भुट्टो ने बातें कही है वो आपत्तिजनक है और वो कहीं ना कहीं पीएम मोदी का जो छवि है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको यहाँ पे बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है। साफ तौर पे एक तस्वीर आप देख सकते हैं जिस तरीके से बिलावल भुट्टो ने बयान दिया है, कहीं ना कहीं उसको लेकर रोष देखा जा रहा है। बिलावल भुट्टो ने जिस तरीके से बयान दिया है उसको लेकर क्या कहते? पाकिस्तान जो आतंकवादियों का सरगना है, आतंकवादियों का गढ़ है और आतंक की फैक्ट्री चलाने वाला पाकिस्तान, उसका बिलावल भुट्टो जो 2 वक्त की रोटी देने में नाकाम है अपने बाशिंदों को, और वो भारत के प्रधानमंत्री जी पर ओछी बयानबाजी करेगा, नाकाबिले बर्दाश्त है। आज लानत भेजते हैं उस बिलावल भुट्टो को हम इस प्रदर्शन के माध्यम से। पाकिस्तान बौखला गया है जिस तरीके से बयानबाजी उसके द्वारा किया जा रहा है। देखिए, पाकिस्तान के कल जो फॉरेन मिनिस्टर ने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री का अपमान किया है, तो मुझे लगता है कि ये कंडेम करने के लायक है, क्योंकि पाकिस्तान एक खुद अपने गिरेबान में झांके अगर, क्योंकि वो एक आतंकवादी देश और पूरे वर्ल्ड ने उनका बॉयकॉट किया है। तो मुझे लगता है कि आज जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दिया उसके थोड़ी देर के बाद ही मैंने देखा कि राहुल गांधी ने भी वही स्टेटमेंट दिया। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो है वो राहुल गांधी के साथ कोई ऐसी सेटिंग थी कि जो स्टेटमेंट हम पाकिस्तान से देंगे और आपने यहाँ हिंदुस्तान से देना है। आज हम चाइना से लड़ाई लड़ रहे हैं, पाकिस्तान से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जो हमारे अंदर जो देश के अंदर जो जयचंद है, हम लोगों को उनसे भी मुकाबला करना है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान चाहे जितना मर्जी कोई बोले, लेकिन पाकिस्तान कभी हमारा सखा जो है वो नहीं हो सकता। जो मोदी जी हैं वो एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, पूरे देश की जनता ने उनको जो है वो वोट देकर जो है वो देश का प्रधानमंत्री बनाया है, और प्रधानमंत्री बनने के बाद वो किसी व्यक्ति या किसी पार्टी के जो है वो विशेष नहीं है, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। उनका अपमान भारतीय जनता पार्टी तो क्या आम लोग भी नहीं सहेंगे। आपने देखा गुजरात के चुनाव में जिन्होंने मोदी जी का अपमान किया था उनका सफाया कर दिया गया वहां के लोगों द्वारा। तो मोदी जी हमारे सिर के ताज हैं, जो उनके खिलाफ बात करेगा हम सड़कों पर भी आएंगे और जरूरत पड़ी तो इसके साथ हमें जो भी करना पड़ेगा वो हम करेंगे। भारतीय सैनिकों ने जिस तरीके से चीनी सैनिकों को खदेड़ा, उसके बाद कहीं ना कहीं पाकिस्तान बौखला गया है। उस तरीके से स्टेटमेंट दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी जी का वो छवि बिगाड़ना चाहता है। देखिए, मोदी जी की छवि आपने देखा पूरी दुनिया में, वो विश्व के नेताओं में जो है वो आते हैं, पूरी दुनिया में उनका एक मान और उनका सम्मान है, और मोदी जी के खिलाफ जो भी बात करता है उसके खिलाफ जनता हो जाती है। और आज हम देख रहे थे कि चाइना के साथ 1962 की जब से 1965 की वार हो, चाहे 62 की पाकिस्तान के साथ युद्ध हो, उसके बाद आज इस देश ने जो है वो सीमा पर कितना काम किया है, कितनी हजारों किलोमीटर मोदी जी ने 2014 के बाद सड़कें बनाई हैं। आज हमारा अमेरिका के साथ जो है वो सैन्य अभ्यास जो है वो उत्तराखंड में अभी थोड़े दिन पहले हुआ। तो चाइना बुखला गया है हिंदुस्तान की ताकत को देखकर, हिंदुस्तान की शक्ति को देखकर, और आज ये हालात हुए हैं कि चाइना और पाकिस्तान मिलकर देश को जो है वो खराब कर रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरें, यहाँ पे बिलावल भुट्टो का यहाँ पे पुतला भी जलाया गया और पाकिस्तान का झंडा भी जलाया गया है। बिल्कुल आप यहाँ पे तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, कहीं ना कहीं जो रोष है पूरे देश में देखा जा रहा है।
Now, viewers, we have been seeing at the images of protest across the country by the BJP and various civilians as well who are carrying out this protest. Another such report filed by my colleague Lomas there in Jammu, where the Dokra protest, in fact, had also been carried out. Let's take a look. अरे बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ ये संधि ये तुम्हारा न्याजी घुटने टेकना और उसके बाद में हमारा जनरल अरोड़ा घुटने टेक करके साइन करवाए। अरे ये न्याजी की बंदूक अभी हमारे पास रहन रखी हुई है और तुम हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री को कसाई करने का प्रयास कर रहे हो। 93,000 का दी हमने पकड़े, 200 पैटर्न टैंक तुम्हारे उड़ा दिए। तुम्हारी औकात क्या है? हमारी देश की भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को दो फाड़ कर दिया और अब हम करेंगे। अब आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। चाइना को जिस तरीके से खदेड़ा भारतीय सेना ने, उससे बौखला गया है पाकिस्तान। चाइना को खदेड़ने के बाद, क्योंकि चाइना पाकिस्तान की अम्मा है, सांप पालने वाले को सांप ही डसेंगे। वो ये विचार करके चल रहा है कि सांप उसको डसने वाले नहीं, जो सांप को दूध पिला रहा है वही उसको डस रहे हैं। जो लाडेन की हालत हुई बाकी सबकी होने वाली है, इंतजार कर। ये जो हमारा आज़ाद कश्मीर है इसको हम हथियाने वाले हैं और पाकिस्तान को दो फाड़ करने वाले हैं। ये कहने का प्रयास करना चाहता हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री को कसाई कहने वाला, अरे तुम्हारी औकात क्या है? 100 रुपए की एक रोटी तुम्हारे वहाँ बिक रही है। तूने जितना ब्याज लिया है उस पर इंटरेस्ट और इंटरेस्ट के ऊपर भी देने के लिए फिर ब्याज लेता है। तुम्हारी औकात नहीं है। पाकिस्तान इस तरीके बयान दे रहा है, आपके हाथ में बिलावल भुट्टो की तस्वीर है और लगातार इसको लेकर के आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? हम यही कहेंगे कि अब कुछ ना कुछ हाल होना चाहिए। अरे एक ही बड़ी स्पष्ट शब्द है जी, एक ही बात। बिल्कुल, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो तस्वीर निकल के सामने आ रही है। कहीं ना कहीं पूरा देश रोष में है, पूरा देश गुस्से में है। जिस तरीके से बिलावल भुट्टो ने बयान दिया है, कहीं ना कहीं पूरा देश चाहता है कि पाकिस्तान माफी मांगे, पीएम मोदी से, भारत से माफी मांगे। हम दूसरे भी जो कार्यकर्ता उनसे भी हम जानने की बात जानेंगे। बिलावल भुट्टो बौखलाया हुआ है, पाकिस्तान बौखलाया हुआ, किस तरीके से? देखिए, मानसिकता खराब हो चुकी है ना। 34 साल के लड़के को आपने वहाँ यूनाइटेड नेशन में भेज दिया रिप्रेजेंट करने को। एक ऐसा लड़का जिसे राजनीति जो है कटोरे में परोस करके दी गई थी। अरे वहां पर पाकिस्तान गया है 34 साल के लड़के के माध्यम से भीख मांगने। वो भीख मांगे, अपनी हद में रहे, अपनी औकात में रहे। और तुम एक ऐसे प्रधानमंत्री के बारे में वक्तव्य दे रहे हो जो जमीनी स्तर से चुन करके आया, 2 बार आया, तीसरी बार भी आने वाला है। और एक बात याद रखना, तुम हमला करते थे तुम्हें उसका जवाब दिया जाता था। ऐसा ना हो इस प्रकार का वक्तव्य जो है वो तुम्हें इस दुनिया के मैप से तबाह करके खत्म करके रख दे। And there you have it, viewers. Multiple images coming in from multiple cities across the country. One from Mumbai, Pune, and of course we have also gotten those visuals from Jammu as well. We had been showing you those reports from Jammu. And we see the kind of anger on the streets in the protesters, in the party member workers who have been on the streets carrying out this protest through the day in various states of the country, in various state capitals, is where they had declared they will be carrying out these protests, images of which are on your screens from Mumbai, Pune and Jammu. And of course, we are seeing how the BJP cadre has taken offense to the kind of statements that had been made by Bilawal Bhutto. And of course, we had seen the kind of statements from the Foreign Minister S. Jaishankar himself, who had also come out and condemned these statements, had said that you are not fooling anybody and that Pakistan, in fact, is the epicenter of terrorism. Cutting across now, viewers, to some breaking updates that we are picking up from the Delhi court, where in fact the Delhi court has reserved the order in the cattle smuggling case that had been going on. And we are also getting you updates that the court in fact is set to pronounce the order on Monday as well. So that is the latest as far as the Delhi court is concerned. And we see how the cattle smuggling case had been going on, and the enforcement directorate in fact had also presented their arguments before the court and had also looked into several leads as far as the enforcement directorate case is also concerned.
including Anuprata Mondal. In fact, the kind of investigation that had also created a lot of controversy around Anuprata Mondal, around the TMC, around the West Bengal government machinery as well. And of course, now we see that the cattle smuggling case is going to be heard now on Monday, where the order will also be pronounced by the Delhi court. Mayuk, my colleague, is also joining us right now on the broadcast. Mayuk, please tell us more about the kind of hearing that has just culminated in the Delhi court, where they have said that the order has been reserved for Monday, Mayuk. Well, absolutely, yes. The order regarding Anubrata Mondal's going to Tihar jail has been reserved. ED wants Anubrata Mondal to be taken to Tihar jail because of the fact that Anubrata Mondal is an influential person, and in some way or the other, Anubrata Mondal or his friends and acquaintances may use influence to create some kind of trouble in West Bengal. Today, in Rao's Avenue Court, heard hearing was on one hand, Kapil Sibal was the lawyer of Anubrata Mondal, and ED has time and again said that Anubrata Mondal's presence is required for the probe to continue in Delhi, and this is the sole reason why they want Anubrata Mondal to be taken to their custody in Delhi in Tihar jail. On the other hand, we have seen that Kapil Sibal said that this is not the right way of taking someone into custody when he is already serving the jail term in different cases in Bengal. That also includes case of a central agency like CBI. On the other hand, ED said that police can require the custody for investigation, and in this case, court has to issue a production warrant. And here comes the part where the court said that the court listened to both of the sides and then said that they are going to reserve the order for today. Tomorrow is a Sunday, and they are going to pronounce the order on Monday. So on Monday, we can clearly know whether Anubrata Mondal is coming from Asansol to Delhi, or Anubrata Mondal is going to stay in Asansol jail only in West Bengal. And Mayuk, stay on with us because we also see that during the course of the investigation done by the Enforcement Directorate, there were several leads that had also come to light, and those have also been presented before the court as well. The arguments that had been presented before the court. Take our viewers through the overview of this entire cattle smuggling case, the order of which is now going to be coming out on Monday, Mayuk. Basically, for our viewers to understand, Anubrata Mondal, one of the strongmen of Trinamool Congress, he's a strongman from Birbhum in West Bengal and close to Mamata Banerjee. He is accused in cattle as well as in different other cases that involves coal smuggling and most importantly, stone smuggling in West Bengal. So here, Anubrata Mondal has been framed in cattle smuggling charges, and he, the Central Investigating Agency, CBI, has clearly said that the Anubrata Mondal is one of the omnipotent facilitator of this entire racket who deals with cattle smuggling in West Bengal and Jharkhand. And this way, the whole network has been controlled by Anubrata Mondal. So they have taken Anubrata Mondal in their custody earlier. And right now, Anubrata Mondal is in Asansol court. Earlier also, Anubrata Mondal filed bail petition, and the Kapil Sibal was there on behalf of Anubrata Mondal as the lawyer defending Anubrata Mondal and seeking plea of bail petition. But in Calcutta High Court as well as in other courts, Anubrata Mondal's bail plea was rejected on the grounds of him being an influential person, and several times it has been mentioned in court and outside court also that Anubrata Mondal has also been charged of threatening lawyers, threatening even the judge of a lower court, and most importantly several other cases that includes cases of post-poll violation, cases of murder charges are there against Anubrata Mondal. So Anubrata Mondal is a strong man, and ED right now has appealed to Rao's Avenue Court after the Delhi High Court said that Rao's Avenue Court to take up this matter and they are not going to interfere in this matter. And then Rao's Avenue Court is now hearing the matter where ED is pleading to take the case of Anubrata Mondal and to question him in their custody in Delhi, and also to keep Anubrata Mondal in Tihar jail and not in any of the jails in West Bengal.
All right, Mayuk Ranjan Ghosh, our senior editor of the sister channel Republic Bangla, in fact, with those details, breaking down the updates as far as the arguments inside of the court are concerned. The case so far, for your understanding as well, and of course, we are going to be tracking Monday as far as this court order is concerned. That will be coming out on Monday itself, and we will see how the court's order will be either more trouble for Anubrata Mandal or not, because we have seen very high-profile leaders of West Bengal, in fact, who have also been summoned by the Enforcement Directorate during the course of the investigation, and that included names like Abhishek Banerjee, his wife, his sister-in-law, and in fact, we had also seen how the TMC leaders had disregarded this entire investigation and had said that this is nothing except political vendetta that is being carried out by the union government. But of course, we have seen during the course of the arguments before the court of law, where pieces of evidences, in fact, had been presented against Anubrata Mandal as well. And of course, all eyes on Monday when the court order will be dictated. And cutting across now to some more breaking updates that we're picking up for you viewers. Union Home Minister Amit Shah has chaired the 30th Southern Zonal Council meeting, and the Union Home Minister, in fact, in his opening address, extended Onam greetings to the people of Kerala and the abode of natural beauty, and said that Onam is a major festival not only in Kerala but in the Indian culture. Now, in the 30th meeting of the Southern Zonal Council held in Thiruvananthapuram, today, in fact, the 26 issues were discussed, 9 issues were resolved, 17 issues were reserved for further consideration, out of which 9 issues were related to the reorganization of Andhra Pradesh, is something that was said by Amit Shah himself. So those are the meetings, in fact, that we had been tracking for you. The 30th Southern Zonal Council meeting that had been chaired by the Union Home Minister Amit Shah. Let me also go across to our correspondents on the ground. Bhaskar Basu, in fact, is also joining me on the broadcast right now. Bhaskar, tell us more about this Southern Zonal Council meeting that had been chaired by Amit Shah. What really was on the agenda? What has been achieved over discussions? Because he's also stated that one of the issues was the reorganization of Andhra Pradesh as well. What were some of the key highlights of this meeting, Bhaskar? All right, Bhaskar, if you can hear me, speak to us a little bit about the Southern Zonal Council meeting that had in fact been chaired by the Union Home Minister Amit Shah, and the issues that had been resolved. Speak to us the highlights of the Southern Zonal Council meeting that had been chaired today. All right, we'll connect that audio line with Bhaskar in just a bit. But these are the details as far as the Southern Zonal Council meeting is concerned now, viewers, where the Union Home Minister Amit Shah, in fact, had chaired this meeting. And post the meeting, in fact, has also stated that there are various issues that have been resolved. At least 26 issues that had been discussed in this Southern Zonal Council meeting, out of which 9 issues, in fact, had been resolved and 17 issues were reserved for further consideration. And out of that, 9 issues were related to the reorganization of Andhra Pradesh as well, that had been conveyed by the Union Home Minister Amit Shah himself as far as this particular meeting is concerned. And this is, of course, to reiterate, the 30th Southern Zonal Council meeting chaired by the Union Home Minister Amit Shah. And Bhaskar Basu, I believe, is back with us on the broadcast. Bhaskar, if you can hear me now, speak to us a little bit about the meeting that had been chaired by Amit Shah, the kind of agendas that had been discussed on it, and the kind of issues that have already been resolved in this particular meeting, Bhaskar. Well, Priyanka, and also on the other hand, another meeting is going on in West Bengal, in Nabanno, the state administrative headquarters in Nabanno, and I would like to
show you some visuals that the 25th meeting of the Eastern General Council is now going on, where the Union Home Minister Amit Shah is now chairing the meeting, along with the Bengal Chief Minister Mamata Banerjee, Jharkhand Chief Minister Hemant Soren, and other two ministers from Bihar. And now also, this is also a very important meeting for the eastern states. And as we know, the BSF issue the BSF issue may be discussed again in this meeting with Amit Shah. And as we know, the Bengal Chief Minister Mamata Banerjee and her government already questioned the issue on BSF, where the BSF area had been increased, and now also there is a possibility, and there is also another possibility that Amit Shah and Mamata Banerjee will meet separately after this Eastern General Council meeting, and various issues can be discussed. As we are getting from the sources that Mamata Banerjee may ask again Amit Shah about the central agencies, and on the other hand, Amit Shah may question Mamata Banerjee, the Chief Minister and also the Home Minister of West Bengal, about the law and order situation in West Bengal. Because as we know, various BJP leaders questioned the role of police in West Bengal in different cases. There had been bomb blasts, there had been the huge recovery of arms ahead of the Panchayat election. And so Amit Shah, the Union Home Minister, may ask Mamata Banerjee, the Chief Minister of West Bengal, about the law and order situation ahead of this Panchayat election. Back to you, Priyanka. Right. And that, of course, Bhaskar, what you're telling us becomes extremely important about this meeting, since they are also telling us that there will be a one-on-one meeting with Amit Shah and Mamata Banerjee as well. All eyes on that, and we trust you to keep us ahead on the updates that we get from these meetings as well. For the moment, thank you for joining us on the broadcast. And here's some news in brief. The teacher who attacked the class 5 girl with scissor and pushed her off from the first floor has been suspended with immediate effect. Meanwhile, Municipal Corporation of Delhi will bear all expenditure on the medical treatment of the student. A combined graduation parade was held at the Air Force Academy, Dundigal, Hyderabad, to mark the successful completion of the pre-commissioning training of flight cadets of various branches of the Indian Air Force. Apex Child Rights Body NCPCR has summoned the EdTech Byju's CEO over allegations that it is indulging in malpractices to lure the parents and children to buy their courses. According to sources, Byju's is facing a range of complaints on social media platforms and consumer websites, with customers alleging that they were exploited and deceived. BJYM supporters staged protest against Pakistan Foreign Minister Bilawal Bhutto over his remark against Prime Minister Narendra Modi. Effigies were burned and slogans were raised by angry protesters against Pakistan. Six members of a family were burnt alive after a fire broke out in their house in the Telangana district. A fire brigade team rushed to the spot, but the time that they reached, the family members, including two children, had died, and further investigation is underway. Time now here for a short break, viewers. Coming up on the other side, Defence Minister Rajnath Singh applauds the forces. He says, be it Galwan or Tawang, forces proved valour. And BJP wraps up the attack on Rahul Gandhi, says Rahul Gandhi and Congress must apologise for their comments. Getting you all the updates on the other side. Your favorite service provider, 10, which gets you the best of entertainment, is back with something very special. अभी मजा आएगा ना भिड़ो. Your
3 favorite movie channels are bringing in super blockbuster films with features like wider picture and crystal clear sound straight to your home. Wow. Oh, I love that expression. To subscribe to your favorite channels, contact your local cable TV operator today or call 10 toll-free number 1-800-419-2020 now. बैंगन भरते का सारा सामान ऑर्डर कर दिया, बैंगन ही ऑर्डर करना भूल गया। बैंगन भी ऑर्डर कर दूं? सिर्फ एक बैंगन देने कौन आएगा? जियो मार्ट सिर्फ एक आइटम भी फ्री डिलीवर करता हूँ। छोटा या बहुत छोटा, जियो मार्ट करता है हर ऑर्डर फ्री होम डिलीवर। जियो मार्ट, हर घर का मार्ट। क्या हुआ रोहन, क्या सोच रहा है? रिया, पहली सैलरी मिली है, तुम भी कुछ आइडिया दो, एक्सपेंसेस को कैसे प्लान किया जाए। रोहन, एक्सपेंसेस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट प्लान करना भी जरूरी है। देखो, सैलरी का कुछ हिस्सा घर के रेगुलर खर्चे के लिए और कुछ मैं अपने लिए भी तो सोच सकता हूँ ना, लेकिन इन्वेस्ट कहाँ करूँ? सिंपल है, एनपीएस में। एनपीएस में? रिया, अभी तो मैंने कमाना शुरू किया है, इतना आगे के लिए अभी से क्यों पैसे जोड़ूं? वो देखो, एक एक करके ईंट जोड़ी जाती है, तब जाके एक घर तैयार होता है। वैसे ही अभी से पैसे जोड़कर हम भी अपना रिटायरमेंट सुखी बना सकते हैं। बात में तो दम है। एनपीएस कम लागत वाली फ्लेक्सिबल लॉन्ग टर्म योजना है, जिससे आपकी बचत ग्रो होकर पेंशन का लाभ देती है। अच्छा, फिर तो मैं अभी अपना एनपीएस अकाउंट ओपन करता हूँ। जो कल की सोचते हैं वो आज से ही थोड़ा थोड़ा जोड़ते हैं। पेंशन है तो टेंशन नहीं। एनपीएस में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। India welcomes those who further India's pride across the globe. Indian diaspora, partners of New India's growth journey in Amrit Kaal. Come and be a part of the 17th Pravasi Bharati Divas from 8th to 10th January 2023 at Indore, Madhya Pradesh, India. For registration, log on to pbdindia.gov.in. Volkswagen Tygoon, India's safest SUVW. Volkswagen. ऑलराउंडर हम भी हैं। और तुम्हारा किचन? कभी स्टेन्स, कभी जर्म्स, तो कभी पानी। आपके किचन और बाथरूम्स को चाहिए MY के लेटिक्रीट SP100, टाइल जॉइंट का ऑलराउंडर। MY के लेटिक्रीट SP100, जोड़ हो तो ऐसा। चाहे गलवान हो तो तवांग। हमारी सेना ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। Defense Minister Rajnath Singh applauds the forces. He says, be it Galwan or Tawang, forces prove valor. ये 1962 वाला भारत नहीं है, ये बात आप याद रखिए। BJP ramps up attack on Rahul Gandhi, says Rahul Gandhi and Congress must apologize. जो आतंकवादियों का सरगना है, आतंकवादियों का गढ़ है, जो 2 वक्त की रोटी देने में नाकाम है अपने बाशिंदों को, और वो भारत के प्रधानमंत्री जी पर ऊंची बयानबाजी करेगा, नाकाबिले बर्दाश्त है। Pakistan Foreign Minister Bilawal Bhutto insults the Prime Minister Narendra Modi. Protests continue over Bilawal's remark across the country. Death toll in Bihar, huge tragedy rises to 70, yet Chief Minister Nitish Kumar says no sympathy. Home Minister Amit Shah in West Bengal for Eastern Zonal Council meet. Mamata Banerjee and other chief ministers to attend.
And cutting across straight to viewers to another breaking update that we are picking up from the Defence Minister Rajnath Singh, who has now made a huge statement, and he has stated that whether then be it Galwan or Tawang, our defence forces have proved their bravery and valour. Now this is a huge statement by the Defence Minister Rajnath Singh addressing the entire incident in Tawang as well, and we had seen various voices from the opposition coming out and condemning this entire incident as well, including Rahul Gandhi, to which we see that Gaurav Bhatia, in fact, in that press conference, had also stated that he needs to come out and apologize. And the backdrop of this entire controversy, now we see that Defence Minister Rajnath Singh has made a huge statement, and he has stated that whether then it be Galwan or then be it Tawang, our defence forces have proved that they are brave and they are working with their bravery and valour, is something that Rajnath Singh has now stated about our defence forces. And of course, we had seen how the Congress leaders, including Rahul Gandhi, had stated that this is in fact had insulted the security forces, and now we are seeing post the undated video that is on your screens right now. We have seen that the opposition leaders had been making various statements insulting our security forces, and to this this is a response of sort that we also see from Defence Minister Rajnath Singh, who has made a huge statements in support of our defence forces. And then he had also stated and reminded the people of the country as well, then that be it Galwan or then be it Tawang, what has really happened in Tawang. The video, in fact, on your screens is from Tawang, the undated visual that had been making the rounds as well. And our defence forces have proved that they work with bravery and valour, is something that Rajnath Singh has come out in defence of our forces. रखना ये हमारा संकल्प है, ये हमारा कन्विक्शन है। चाहे काशी विश्वनाथ का प्रश्न हो, चाहे हमारे महाकाल उज्जैन का हो, बद्रीनाथ का हो, केदारनाथ का हो, सोमनाथ का हो, इनको भव्य स्वरूप प्रदान करना ये कोई अपराध हम लोगों ने नहीं किया। भारत के किसी कौम के साथ कोई हमने डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है। ये तो भारत की विरासत है। भारत की विरासत को सुरक्षित रखना क्या यह अपराध है? इसको भी लेकर बहस की जाती है। और अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे सैकड़ों कानूनों को समाप्त कर दिया हम लोगों ने, जो पुराने पड़ गए थे, जिनका कोई रेलेवेंस नहीं रह गया था। और लगभग 1500 से अधिक कानूनों को समाप्त कर दिया। अभी कल की कैबिनेट में लगभग कई ऐसे एक्ट्स थे जो पुराने थे, जिनका की कोई रेलेवेंस अब रही नहीं गया था, उनको भी समाप्त कर दिया है। छोटे छोटे मामलों में उठाकर जेल में बंद कर देना। अब आप जानते हो कि छोटी छोटी चीजों में इसका कोई औचित्य नहीं है। अब एक सिलसिला इसमें सेना के बारे में भी चला है, थोड़ा सा हटकर बातें उससे मैं कर रहा हूं। लेकिन मित्रों, मैं संसद में कह चुका हूं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, नहीं तो वह बातें नहीं बोलूंगा जो कि मैंने संसद में नहीं कही है। चाहे गलवान हो तो तवांग, हमारी सेना ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि हमने भी कभी किसी अपोजिशन के लीडर के इंटेंशन पर कभी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है। पॉलिसीज को लेकर हमने डिबेट किया है। राजनीति सच बोलकर ही की जाती है।
And there you have it, viewers. We just listened in to what the Defence Minister Rajnath Singh also had to say about the people, in fact, who have been insulting our forces, and has said, in fact, giving out a big message to the people of the country, claiming that be it Galwan or be it Tawang, our defence forces have proved that they give the message of defeat to the enemy country. And now we also have Colonel Rohit Dev, who is also joining us on the broadcast. Colonel Rohit Dev, if I could come to you over the statements that we just heard in from the Defence Minister Rajnath Singh, who has stated that they are, of course, standing by their forces, by our forces, and that then be it Galwan or be it Tawang, our defence forces have proved that they work with bravery and with valour. And do you also see this as a response to various leaders who have been coming out and insulting our forces at a time like this, sir? See, I quite agree with what Shri Rajnath Singh has just spoken publicly. And it's gracious of a Defence Minister of our country to laud the sacrifices and the commitment of the forces. And that's how it's supposed to be, and that's how it's supposed to be in any country of any stature. However, I'm deeply pained and I'm quite appalled at the conduct of people, and I don't know why people don't take names. I will take a name today because I generally don't take names. A person called Rahul Gandhi, who was cheekily saying in some press conference last afternoon or sometime that हमारे जवानों को पीट रहे हैं, if I heard it correctly. I mean, who's this man? And does he have a job to ridicule India? Does he get paid for it? What is his commitment to the country? He's been on the Parliamentary Committee for Defence Affairs for the longest time and done nothing. He has been in the Parliament and trying to do Bharat Jodo Todo, whatever he's doing. But I don't like such people. These kind of people are creating an ilk around them who are detrimental to the national security. They are detrimental to the national interest. Which defense minister of which developed country or a meaningful army, which they hold, goes on record publicly to the masses over a media channel to tell them what they are doing diplomatically, economically, or militarily against or for any nation across the world? Nobody does that. So what are they saying? Too many TV debates that happened in the last 4 or 5 days post that video of the last year. And I'm quite appalled at these people. You want to do politics, by all means. But you want to politicize the efforts and trivialize the efforts of the armed forces. I mean, you're a junkie. I mean, I have no other words. This is a very mild word I can use as a junkie because I want to be absolutely clear to these people that just because you adorn the political mantle in this country, you don't have the bloody right to ridicule the forces. And you can be anybody. You can have any money in your pocket. Right. You can have any fancy. You can have any power. But if you ridicule the sacrifices of the soldiers and the pain their families go through beyond that, and you who have done nothing for galvanizing the forces in terms of the accretion or wherewithal, their military equipment for the last 30, 40 years, you have the bloody gall to come and speak publicly about people getting hit by the Chinese. You don't even know that unarmed combat is a form of an art of tactical warfare. You have signed agreements. You want the army to escalate it to fire a missile tomorrow morning? Are you so foolish and naive? You don't know as a politician what to say, what not to say? And then these are the people being prompted by the media of the world. Colonel Rohit Dev, I request you to stay on with us and hold on to your thoughts. Since we also have various other voices also joining us, we have Brigadier Hemant Mahajan, who's also joining me on the broadcast right now. Brigadier Hemant Mahajan, we see, the anger with which these kind of insulting remarks from leaders like Rahul Gandhi are being met. And we just saw the Defence Minister also coming out and stating and reiterating the bravery and the valour of our forces. And isn't it also a little sad that the Defence Minister has to come out and reiterate something that we all as Indians also know? How do you see this statement coming in from the Defence Minister? What we have to understand is that there are some politicians and some in the media are of the view that Indian Army was at the receiving end of it because they could not use their weapons. Now, what you have to understand is the Peace and Tranquility Agreement which was signed between 2001 to 2004, and 4 such agreements were signed, if I remember the number clearly. And it was decided that no weapon will be used on the border to resolve any issue.
So government which was there between this period is the one which is responsible for signing a very stupid argument, because if you have an army on the border and if it cannot use its weapon, obviously you have made the army powerless. I mean, you have to now fight there with the help of dandas and barbed wire and teasers and such like. So firstly, this agreement was signed, which was the wrong thing to sign. It was called the Peace and Tranquility Agreement, but it was peace for Chinese, but not so much of a peace as far as the Indian army is concerned. Second issue is what you have to understand is what happened at Tawang or at Yangtze. There is no doubt at all that the Chinese were at receiving end, because the movement of Chinese was detected well, the reinforcement went in time, and Chinese were given quite a bloody nose as far as this incident is concerned. Exactly something similar had happened in Galwan also, but Galwan we lost 20 brave soldiers, including Colonel Babu, commanding officer of 16 Bihar. But Chinese have suffered more than 70 factory casualties there, So therefore, if some people think that the Indian army is at the receiving end of the Chinese, that kind of a sympathy they should just take away with. Indian army has a moral ascendancy as far as the Chinese are concerned, and they more than adequately respond to anything that the Chinese do. The only thing that we have to understand is that in a time like this, we as a nation have to stay united, be it in media, be it in political parties, and stand behind the Indian army. If we show that we are divisive, we can, in fact, quite a few of them are speaking the language of global times, which is the actual mouthpiece of China. Such kind of a language should not be spoken just because you have an enmity with the government in the power. But that does not mean that gives you right to talk something ill about the armed forces, talk ill about the Indian army, because Indian army is more than capable of taking care of any such situations that arise on the border, be it at Tawang or be it anywhere else, because what we have to understand is this is not the last of the situation that we have seen. Many such things will keep on happening. And I would just like to add one more point before I hand over the mic to you. One of the same opposition leaders has said that China is preparing for a war, and what are we doing? Let me tell you straight away that what he's saying is wrong. We are in the month of December. There's a heavy snowfall as far as Tawang and the Chinese border is concerned, and no major war can take place during this time. So his appreciation that China will start a war in a short while is completely wrong, and we would like to remind our viewers that yesterday was 16th of December and the 52nd anniversary of our victory over Pakistan. Why was this war fought in December? It was fought in December because that time the Indo-China border gets covered with snow and no major battle can take place. And therefore, Field Marshal Manek Shah had decided to go to war in Bangladesh, Liberation Bangladesh War, from 3rd of December to 16th of December. So this basic thing should be understood by the politicians. Just because they want to say something against the party in in power, that should not make them say something against the army. And what we have to understand is you may be of any political thought process, you may be from any part of the media, but as far as national security is concerned, there should just be one way of talking, and that is talking the language of Indian army or talking the language of the nation. There can be no two opinions as far as national security is concerned, because if you do that, then you're giving an opening to the Chinese. Because while Chinese voices can be heard in our media, Chinese language can be heard from our politicians. That's true. Can we, does these kind of articles, will they ever be written in global times? Will these kind of tweets and all, will they ever go on the Chinese social media? So Chinese are immune to anything that India says. They will hear only the government views. Well, as far as India is concerned, because of some people, some politicians and some people in the media, we hear the language of Chinese. I would almost call them as Chinese agents. And this may not affect the Indian army as such, but it does affect some patriotic Indians who sincerely think, oh my God, so-and-so newspaper is saying, so-and-so channel is saying that Chinese have the Indian army jawans were beaten up and all that kind of a thing. So they get worried. Some genuine people, some innocent people, some innocent citizens who are not aware. Because Brigadier Hemant Mahajan, you're making some very important points. In fact, you have called out these people and you call them Chinese
Chinese agents as well. These people, in fact, who come out and insulted the security forces. Stay on with us as we are breaking those fresh images of Kiran Rijiju as well on your screens right now, viewers, where we see Kiran Rijiju, in fact, has taken to social media. He's tweeted out this image as well and has talked about how the Yangtze area, in fact, in Tawang, Arunachal Pradesh, is fully secure now due to the adequate deployment of the brave jawans of the Indian Army. Now, those are the visuals on your screens right now of Kiran Rijiju as well, along with our defense forces, and has now also stated, along with this visual, in fact, Kiran Rijiju has come out and stated that the Yangtze area of Tawang of Arunachal Pradesh is fully secure now due to the adequate deployment of the brave jawans of the Indian Army, and those are the visuals on your screens. On one side, we also see Rajnath Singh coming out and making those statements, the very strong statements, and stating that the bravery and the valor of our defense forces, in fact, is always going to be there. And we also see now that Kiran Rijiju also coming out and sharing these images from Tawang, and have stated that now due to the adequate deployment of the brave jawans of the Indian Army, the entire area has also been secured. Viewers, we've been getting you various voices through the day over the defense experts of various experts as well, as far as the entire Tawang incident is concerned. And we also see the kind of political war of words that has also broken out on this, the kind of opposition leaders that have come out and insulted our security forces as well. And now we are looking at the kind of answers that the defense minister is coming out and giving to these kind of people who have, in fact, insulted the security forces as well. We also have Major General S.P. Sinha, who's joining us on the broadcast right now. Major General, if I could come to you over the statements that we have been hearing, the statements, in fact, that are quite insulting of our security forces as well, to which now we see the defense minister coming out and stating that this is the bravery and the valor of our defense forces. And now we also look at Kiran Rijiju sharing that very important visual, claiming that the entire area is, in fact, secure because of the adequate deployment of our troops there. And this comes in the backdrop of these kind of insulting statements that are being used for our defense forces, sir. You see the irrelevant comments by certain political leaders of the parties. I personally see it as a manifestation of frustration. When they are out of power, they have, and even when they were in power, I remember that they never give proper dues to Indian Armed Forces. You must be remembering that when surgical strike was carried out, they asked for proof. When Balakot airstrike was carried out, they asked for proof. They said, we don't believe, we want proof. So here are certain people in political system who do not believe when what DGM was, Director General Military Operation, briefs about surgical strike, and Vice Air Chief briefs about Balakot airstrike. They still want proof. That means they don't believe armed forces. If this is the thought process of these political leaders, I really feel very hurt and very, very sad on the attitude of these people. And these people, they are saying that Chinese troops thrashed our jawans. It is purely a figment of imagination. It is not true. It is far from truth. The truth is that our 100 soldiers bashed the hell out of these 300 PLA troops, and they ran away. And they asked for flag meeting. Flag meeting means two military commanders of both the sides sit down and thrash out the issue. So both of the military, PLA requested for flag meeting. And flag meeting was held, and the issue got resolved. Now, wherever there were certain gaps were there, we have secured that, plugged that gap. But the unfortunate part is, how can political leaders make such stupid statements, irrelevant statements, and try and insult armed forces? They have no respect for armed forces. Don't they know the valor of Indian Army? Don't they know what Indian Army did in Kargil at 18 degree in gradient? Can you say Dhawakar and launch an attack? Even a boy of 25 years of age, if he takes 8-9 steps because of lack of oxygen, he will start panting. And here were our troops, jawans, who were climbing up the hill and shouting Dhawakar, Jai Ma Kali, and things like that, our war cry. And we won the victory. So I think anybody in this country who raises a finger on the valor and bravery of our Indian Armed Forces and Indian Army
I think it is a misguided missile. They don't know what they're talking about, and it has other connotation, other links. It is totally irrelevant from Indian capability of Indian armed forces, and it is very sad. And I think they should not cross this Lakshman Rekha. There is a maryada, because Indian armed forces are apolitical in nature. They have nothing to do with politics. These people, one person from the Congress party told General Rawat, he's Sadak ka gunda. Can you imagine? A political person is abusing Chief of Army Staff. What has Chief of Army Staff done to justify Sanjay Dixit calling him Sadak ka gunda? So I think they have crossed the limits, and they have to be within limits. It is not good for the political health of this country if Indian armed forces are getting insulted day in, day out. There is a limit to tolerance. Let's not cross that limit. Let's respect each other's territory. Your territory is political system. Our territory is fighting. So let's not cross the dividing line. It is bad for the morale, bad for the health of political system. And if you continue insulting, then I think things won't be good. Indirectly, I'm trying to I hope you understand what I'm trying to hint at. True. It is not good. It's not good. True. Major General SP Sinha, I request you to stay on with us. We also have Major General PK Sehgal as well joining us on the broadcast. Major General PK Sehgal, if I could come to you over these statements that are coming to light. And of course, there are several voices now coming out and condemning these opposition leaders who come out and make these kind of statements insulting our security forces, that the defense minister also has to come out and reiterate the bravery and the kind of work that the security forces also do. And now we are looking at, several opposition leaders, including Rahul Gandhi, completely unapologetic about the statements that they've already made. The people of the country are very alive to the fact that the Indian Armed Forces are doing a stunning job. They have emerged as the guardian angel of India's homogeneity and integrity. No soul in the world today has any doubts on the capability and professionalism of the Indian Army. Unfortunately, certain political leaders, including Rahul Gandhi, casting aspersions is making them look like clowns in the eyes of the people of India. People of India are very mature and they fully understand, and they will show them their place when the next election takes place. More such statement means they are digging their own party into a deeper and deeper. And by the next election, they will be reduced to almost a single digit in case they continue to do such things. Their statements are condemnatory, they're extremely damaging, and unfortunately, where the Indian Army needs to be appreciated. The world is appreciating the Indian Army. Today, they are most revered, the most regarded, most respected, and most professionally competent army. And pointing fingers at them tantamounts to insulting yourself. It only indicates how little Rahul understands what is warfare. Absolutely. Absolutely. Major General PK Sehgal, I want to thank you for joining us and sharing that perspective on this very big story that we're tracking for you viewers. As far as the Defense Minister Rajnath Singh is concerned, who had to come out and reiterate the bravery and the way, in fact, that our security forces work, and had also, now we are seeing Kiran Rijiju also sharing those visuals of Tawang, claiming that because of the adequate deployment of our troops is that this entire area is also now secure. And of course, as we track these developments from Tawang, we see that the BJP carrying out the protest across the country, in fact, as well, and also how Rahul Gandhi is completely being unapologetic for his comments. Time now here for a short break, viewers. Coming up on the other side, death toll in Bihar, huge tragedy rises to 70, yet Chief Minister Nitish Kumar says no sympathy. And Home Minister Amit Shah in West Bengal for Eastern Zonal Council meet. Mamata Banerjee and other chief ministers to attend as well. Amity has been ranked India's #1 private university for the 10th year
by India Today, a testimony to Amity's world-class education whilst imbibing values and sanskars in students. क्या हुआ रोहन, क्या सोच रहा है? रिया पहली सैलरी मिली है, तुम भी कुछ आइडिया दो, एक्सपेंसेस को कैसे प्लान किया जाए? रोहन, एक्सपेंसेस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट प्लान करना भी जरूरी है। देखो, सैलरी का कुछ हिस्सा घर के रेगुलर खर्चे के लिए और कुछ मैं अपने लिए भी तो सोच सकता हूँ ना, लेकिन इन्वेस्ट कहाँ करूँ? सिंपल है, एनपीएस में। एनपीएस में? रिया अभी तो मैंने कमाना शुरू किया है, इतना आगे के लिए अभी से क्यों पैसे जोड़ूं? वो देखो, एक एक करके ईंट जोड़ी जाती है, तब जाके एक घर तैयार होता है। वैसे ही अभी से पैसे जोड़कर हम भी अपना रिटायरमेंट सुखी बना सकते हैं। बात में तो दम है। एनपीएस कम लागत वाली फ्लेक्सिबल लॉन्ग टर्म योजना है, जिससे आपकी बचत ग्रो होकर पेंशन का लाभ देती है। अच्छा, फिर तो मैं अभी अपना एनपीएस अकाउंट ओपन करता हूँ। जो कल की सोचते हैं वो आज से ही थोड़ा-थोड़ा जोड़ते हैं। पेंशन है तो टेंशन नहीं। एनपीएस में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। Magnificent picture, magnificent sound, magnificent experience, Magnifique. High performance TVs by iWire Japan, now in India. Hey Rahul, what's up? Hey, kicked about our first date? Of course. Benefits up to rupees 30,000 only at the Citroën C3 Carnival. Book today. अगर मिठाई जंक फूड से है यारी, तो डायबिटीज की कर लो तैयारी। Get Bhutto's Diabetes Care Program with a free glucometer and expert advice. Give a missed call on 740 1100. Very good afternoon and thank you for tuning in. You're watching the news at 1 p.m. I'm Suesha Sawant, and the top story we are focusing at this afternoon after Rahul Gandhi made that comment demoralizing the forces over the situation at the LAC. The government responding in full force. A lot of reactions that are coming in, that and much more. First, a quick check of the headlines. A day after Rahul Gandhi insulted the army, Rijiju has tweeted a picture. It is a big message to Congress doubters. बलवान हो तो तवांग। हमारी सेना ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। Defence Minister Rajnath Singh applauds forces. He says be it Galwan or Tawang forces proved their valor. ये 1962 वाला भारत नहीं है, ये बात आप याद रखिए। BJP ramps up the attack on Rahul Gandhi. Says Rahul Gandhi and Congress must apologize. जो आतंकवादियों का सरगना है, आतंकवादियों का गढ़ है, जो 2 वक्त की रोटी देने में नाकाम है अपने बाशिंदों को, और वो भारत के प्रधानमंत्री जी पर ऊंची बयानबाजी करेगा, नाकाबिले बर्दाश्त है। Pakistan FM Bilawal Bhutto, who's insulted Prime Minister Modi. Protests continue over Bilawal's remark across the country. Death toll in Bihar Hooch tragedy has now risen to 70. Yet, Chief Minister Nitish Kumar, who says no sympathy. Home Minister Amit Shah in West Bengal for Eastern Zonal Council meet. Mamata Banerjee and other chief ministers in attendance. And well, after Anurag Thakur hit out at Rahul Gandhi, he said Rahul Gandhi was seen having soup with Chinese officials during Doklam incident, whereas Indian army was fighting with the Chinese troops. When Indian army did the surgical strikes, even then they questioned us. Rahul Gandhi and Congress does not have faith in our army. This is not the India of 1962. This is the India of 2022.
of 2014, where India is moving forward under the leadership of Prime Minister Modi. UPA government could not purchase fighter jets, bulletproof jackets or even snow boots for our army in 10 years. What did you do for the army, asks Anurag Thakur, who's attacked Rahul Gandhi after he made that statement against the centre, demoralizing our forces over the situation at the LAC. You saw how Union Minister Kiran Rijiju also posted that picture where he met with the soldiers and said that all is safe in Arunachal Pradesh. And Defence Minister Rajnath Singh, who also lauded our forces and said not an inch of land can be taken. This is the latest statement coming in from Union Minister Anurag Thakur, who's hit out at Rahul Gandhi. He's questioned the Congress party on what they did in their reign for the army, of how they could not even provide basics for the army, of how they've always demoralized our forces and they continue to do that. In that detailed statement, Anurag Thakur has said that the UPA government could not even purchase fighter jets, bulletproof jackets or snow boots for the Indian army in 10 years. The BJP is now questioning the Congress on what they've done for the Indian army. Let's listen into Anurag Thakur and what he said. राहुल गांधी जी के बयान पर मुझे कोई ज़्यादा हैरानी नहीं होती, लेकिन बार बार ये दिखाता है कि जब डोकलाम की घटना भी हुई तब भी राहुल गांधी जी किसी और के साथ नहीं, चाइनीज़ अधिकारियों के साथ सूप पीते नजर आए, जबकि भारतीय सेना के जवान अतिक्रमण करने वाले चीन के सैनिकों के साथ लोहा दिखाते हुए नजर आए। जब भारत के सैनिकों ने सर्जिकल स्ट्राइक की तब भी राहुल गांधी जी और विपक्ष के नेता प्रश्न चिन्ह खड़े करते नजर आए। शायद राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी को भारतीय सेना पर विश्वास कम है, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है भारतीय सेना इतनी मजबूत है जो सर्जिकल स्ट्राइक भी करती है और अतिक्रमण करने वालों को करारा जवाब भी देती है। So you see how the BJP, in a full frontal attack, has asked Rahul Gandhi to apologize for what he said, as the BJP is saying that it is Rahul Gandhi who is spreading a lot of confusion and demoralizing our forces by making the statement that he's made. You would remember how Rahul Gandhi during the Bharat Jodo Yatra has said that China is preparing to wage war against India, and BJP hitting out in full force saying that this is not Nehru's India, this is Modi's reign. And the reigning government is ensuring that not even an inch of land that will go to China. Most importantly, the BJP also questioning the Congress on what the Congress has done for the Indian army in all these years. In the 10 years that they were in power, basics that they could not even provide to the army. Shahzad Poonawala from the BJP is with me on the phone line. Shahzad, that's the BJP asking Rahul Gandhi to apologize, saying that he's spreading utter confusion, but most importantly, he continues to demoralize our forces, and that's what the Congress has been doing, rather questioning what the Congress did for the forces. Firstly, let me take the opportunity and your platform to thank the government of India and particularly Kiran Rijiju ji to go there and to stand with our forces, and we stand with the forces at the time and they've given a befitting response to China, whether it's Galwan or whether it's Tawang. But on the other hand, it's a shame that the leader of the Congress party behaves like the editor of Global Times. He peddles Chinese propaganda, perhaps because he has the MOU with China, because he has taken Chinese money, and he lies and tries to demoralize our forces. And don't forget, this is not the first time. You remember surgical strike was called Pinky Dalali, Balakot airstrike, they said Chil Kawamare, and they called our army chief Sadak Ka Gunda. This is the true face of the Congress party. INC does not mean Indian National Congress. It means I need Chinese MOU, I need Chinese money, I need Chinese propaganda. Absolutely, and we also heard that news conference by Gaurav Bhatia, where the BJP is now asking Rahul Gandhi to apologize. But most importantly, Rahul Gandhi must come clear, because fact is, Shahzad, that a responsible leader in the opposition, before making such a big statement, especially when it is related to war, must also come out. इसलिए अब दुनिया ने क्या, देश ने तो पहले ही कर दिया, दुनिया भी अब उनको कोई सीरियसली नहीं लेती है।
सर पिछले दिनों पार्लियामेंट में मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भी स्पष्टीकरण दिया, तमाम सारी चीज़ें बताई, उसके बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी का इस तरीके का बयान कि चाइना जो है वो पूरी तरीके से युद्ध के लिए तैयार है। पत्रकारों से कहना कि चाइना पर तो आप लोग प्रश्न पूछेंगे नहीं, कैसे देखते हैं? बार बार एक ही टॉपिक पर मैंने कहा ना कि कोई सीरियस लेता नहीं है, उनके बातों का कोई औचित्य नहीं है। मैंने पहले भी कहा, आज फिर कहता हूँ, सर्जिकल स्ट्राइक में क्या बयान था सब जानते हैं। देश और दुनिया हमको मानती है। आज दुनिया में एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनकी बात को पूरी दुनिया मानती है, वो मोदी जी हैं। वो पच नहीं रहा है लोगों को। कई लोग कहते हैं मोदी हटाओ देश बचाओ, और वह हमको लाओ नहीं कह पा रहे हैं। ये स्लोगन के साथ कहते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक में वही बात हुई। जो भी हमने भले काम किए उस पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया। हमारे पड़ोसी देश जो सवाल पूछते थे वही सवाल हमारे विपक्ष के लीडर्स पूछते रहे हैं, जो दुर्भाग्य है। जबकि हम लोग प्रजातंत्र के दो पहिए होते हैं, कोई भी आए सत्ता में जो विपक्ष में हो। अटल जी ने 71 के वार में साफ साफ कहा था कि आगे बढ़िए प्रधानमंत्री जी, हम आपके साथ हैं। देश की रक्षा सुरक्षा जब होगी तब हमारा प्रजातंत्र रहेगा, तब हम पक्ष और विपक्ष होंगे। लेकिन आज तो सोच ही नहीं है। विपक्ष इतना बचकाना है, इतनी गैर जिम्मेदाराना के बयान देते हैं, जिसे देखकर हम सब लोग प्रभु से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु इनको भी सद्बुद्धि दीजिए, विपक्ष को भी सद्बुद्धि दीजिए। धन्यवाद सर। Sardar RP Singh now joining us on the phone line. Well, it is the BJP not only asking Rahul Gandhi to apologize, but also the very fact that since they have not been able to gather enough force to come to power, now they're just doing anything and everything to run Modi down. But really, Sardar RP Singh, for a responsible leader in the opposition to run the government down, is it fair to make such statements that hold the kind of gravitas and can not just scare local citizens but demoralize the army? Well, in politics it's still acceptable to run the government down, but they can't run the armed forces down. They can't run the valor of the armed forces down. When they do so, it means they are doing disservice to the nation. That's the problem with Rahul Gandhi. Because they want to hit the ruling party or the Prime Minister Modi ji, they go to any extent. They go to extent of appeasing terrorism, to appease terrorists, as Mr. Shiv Kumar has done in Karnataka. They go to extent of demoralizing or downgrading the valor of the army. That's the problem. And they have to understand, our army stands at the border by the courage of the people of the country, and they safeguard the people of the country. And this government has always supported, the President Modi government has always supported and given free hand to the armed forces. Unlike in their regime in UPA, when after 26/11 the Air Force Chief asked for the retaliatory attack, and he was refused to go ahead and attack the Pakistan forces. So it's seen as change, but as Rahul Gandhi is, he does it on behalf of the Chinese Global Times or somewhere else in China. Whatever he speaks on behalf of the Chinese Communist Party of India. So that's how he is. I mean, and it's very sad that he tried to demoralize the Indian forces, Indian armed forces. Absolutely, and no answers coming in from the Congress when the BJP questions them on their link with the Chinese, on the Chinese funding that came. Anurag Thakur also put out a statement saying how Rahul Gandhi was having soup with the Chinese officials during Doklam. So those statements are never addressed from the top leadership of the Congress party. But when it comes to making statements of this nature, and that to something that can really have an impact on the entire country, not backed by any proof, not backed by any statement, not backed by any document or nothing in black and white, but they go on to say this for mere politics.
Well, if you remember, after the abrogation of Section 370 and 35A, Mr. Rahul Gandhi very next day made a statement that, oh, there's a bloodbath happening in Kashmir, although there's nothing which was happening in Kashmir. So again, I mean, either he speaks on behalf of Pakistan or on behalf of China. That's the problem. He amplifies whatever Pakistan or whatever suits Pakistan or China. And then he tried to demoralize the forces or the administration here in the country. That's the sad part. And I'm hopeful the people of the country will understand that why Rahul Gandhi every time comes and speaks the language of the Chinese Communist Party. Absolutely. Sardar R.P. Singh, thank you for speaking to the public this afternoon. Also, once again, playing out that statement by Defence Minister Rajnath Singh, where he's lauded our forces and spoken about the valor and courage of our men. लेकिन सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखना यह हमारा संकल्प है, यह हमारा कन्विक्शन है। चाहे काशी विश्वनाथ का प्रश्न हो, चाहे हमारे महाकाल उज्जैन का हो, बद्रीनाथ का हो, केदारनाथ का हो, सोमनाथ का हो, इनको भव्य स्वरूप प्रदान करना यह कोई अपराध हम लोगों ने नहीं किया है। भारत के किसी कौम के साथ कोई हमने डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है। यह तो भारत की विरासत है। भारत की विरासत को सुरक्षित रखना क्या यह अपराध है? इसको भी लेकर बहस की जाती है। और अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे सैकड़ों कानूनों को समाप्त कर दिया हम लोगों ने, जो पुराने पड़ गए थे, जिनका कोई अब रेलेवेंस नहीं रह गया था। और लगभग 1500 से अधिक कानूनों को समाप्त कर दिया। अभी कल की कैबिनेट में लगभग कई ऐसे एक्ट से जो पुराने थे, जिनका की कोई रेलेवेंस अब रही नहीं गया था, उनको भी समाप्त कर दिया। छोटे छोटे मामलों में उठाकर जेल में बंद कर देना। अब आप जानते हो कि छोटी छोटी चीजों में इसका कोई औचित्य नहीं है। अब एक सिलसिला इसमें सेना के बारे में भी चला है, थोड़ा सा हटकर बातें उससे मैं कर रहा हूं। लेकिन मित्रों, मैं संसद में कह चुका हूं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, नहीं तो वह बातें नहीं बोलूंगा जो कि मैंने संसद में नहीं कही हैं। चाहे गलवान हो तो तवांग, हमारी सेना ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि हमने भी कभी किसी अपोजिशन के लीडर के इंटेंशन पर कभी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है। पॉलिसीज को लेकर हमने डिबेट किया है। राजनीति सच बोलकर ही की जाती है, झूठ बोलकर लंबे समय तक राजनीति नहीं की जा सकती। राजनीति यह दो शब्दों को मिलाकर बना हुआ है, राज और नीति। और नीति यह संस्कृत के नए धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ले जाना, टू कैरी आउट। वह पॉलिटिकल सिस्टम जो समाज को सही रास्ते पर आगे ले जाने का काम करे, उसे ही हम राजनीति कहते हैं। राहुल गांधी जी के बयान पर मुझे कोई ज़्यादा हैरानी नहीं होती, लेकिन बार बार ये दिखाता है कि जब डोकलाम की घटना भी हुई तब भी राहुल गांधी जी किसी और के साथ नहीं, चाइनीज़ अधिकारियों के साथ सूप पीते नजर आए, जबकि भारतीय सेना के जवान अतिक्रमण करने वाले चीन के सैनिकों के साथ लोहा दिखाते हुए नजर आए। जब भारत के सैनिकों ने सर्जिकल स्ट्राइक की तब भी राहुल गांधी जी और विपक्ष के नेता प्रश्न चिन्ह खड़े करते नजर आए। शायद राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी को भारतीय सेना पर विश्वास कम है, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है भारतीय सेना इतनी मजबूत है जो सर्जिकल स्ट्राइक भी करती है और अतिक्रमण करने वालों को करारा जवाब भी देती है।
So those are the responses coming in from the BJP as they demand that Rahul Gandhi must apologize, also making it very clear that this is not Nehru's India, this is the India under the Modi government, and they will ensure not an inch of land is taken by anyone, as national security is supreme for them. But also in the many responses coming in, BJP is questioning as to what the Congress has done for the Indian Army in all these years during their reign, while they continue to demoralize the forces every single time. Also, a quick check of the other big stories we are tracking for you this afternoon. While addressing the FICCI annual convention and AGM in the national capital, Defence Minister Rajnath Singh made a huge statement. He said that whether it is Galwan or Tawang, our defence forces have proved their bravery and valour. हमारी सेना ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। Protests were staged in Jammu against Pakistan Foreign Minister Bilawal Bhutto over his remark against Prime Minister Modi. Effigies were burned and slogans were raised by angry protesters. Shame on Pakistan posters were burned as a huge protest took place in Mumbai. Protesters demanded strict action being taken against Pakistan Foreign Minister Bilawal Bhutto over the remark that he made against Prime Minister Modi. A school teacher attacked a class 5 student with scissors and pushed her off from the first floor. She's now been suspended with immediate effect. Meanwhile, the MCD will bear all the expenses of the medical treatment for the student. A combined graduation parade that was held at the Air Force Academy, Dundigal in Hyderabad, to mark the successful completion of pre-commissioning training of flight cadets of various branches of the Indian Air Force. Apex Child Rights Body NCPCR has summoned EdTech Byju's CEO over allegations that it is indulging in malpractices to lure parents and children to buy their courses. Now, according to sources, Byju's is facing a range of complaints on social media platforms and consumer websites, with customers alleging that they were exploited and deceived. 6 members of a family were burnt alive after a fire broke out in their house in Telangana's Mancharle district. A fire brigade team that was rushed to the spot. However, by the team, they reached all family members, including 2 children who had died. Further investigation is underway. Where you see how effigies are being burnt of Foreign Minister Bilawal Bhutto in Pakistan. This over his statement on Prime Minister Modi. Pakistan Foreign Minister Bilawal Bhutto, who made that remark against Prime Minister Modi, has ever since been facing a lot of backlash, with protests happening in literally every part of the country. Sporadic protests that we see where protesters are demanding that Bilawal Bhutto must apologize, and that this is not just an insult to the Prime Minister but also sentiments of the entire country that are hurt. Listen in. भारतवर्ष के बारे में जिस प्रकार से उन्होंने टिप्पणी की है वह घोर आपत्तिजनक है और भारत की मर्यादाओं के खिलाफ उन्होंने इस प्रकार का बयान दिया है। और उनको इस बात का मलाल है कि 1971 के युद्ध में पाकिस्तान ने शिकस्त खाया था उनके नाना के नेतृत्व में, और उस मलाल को आज तक भुला नहीं पाए।
अगर उनको औकात है तो फिर से एक बार भारत से आजमाने का काम करे। जब जब वो भारत से युद्ध करने का काम पाकिस्तान ने खाया है, हर बार वो शिकस्त होने का पाकिस्तान शिकस्त हुआ है। आगे भी इस प्रकार का युद्ध करने की अगर उनमें क्षमता है तो आके फरमा ले। All right, so we keep cutting across to these various live sound bites that have been coming of protests that have been staged in various parts of the country as offense taken against that remark made by Pakistan Foreign Minister Bilawal Bhutto against Prime Minister Modi, and anger is escalating over this very remark, where you see how they're expressing their anger, demanding that Bilawal Bhutto has hurt the sentiments of India, and that there must be an apology. Another reaction coming in, listen in. रक्षा परिषद की बैठक के बाद मीडिया को ब्रीफिंग करते हुए एक आरोप लगाया, कहा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जिस तरह से अपशब्द भाषा का प्रयोग किया, उससे पूरा देश शर्मसार है और आक्रोशित है, उद्वेलित है। जो पाकिस्तान आज पूरी दुनिया में एक फेलुअर देश के रूप में स्थापित हो चुका है, जो पाकिस्तान पूरी दुनिया में आतंकवाद का प्रोड्यूसर है, उस पाकिस्तान का विदेश मंत्री हमारे देश के लोकप्रिय नेता के ऊपर इस तरह का आरोप लगाता है। इससे पूरा का पूरा आम जनमानस आंदोलित है, गुस्से में है। उसी गुस्सा का प्रतीक के रूप में आज हम लोगों ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के माध्यम से और आम युवाओं को लेकर के एक विशाल पुतला दहन का कार्यक्रम किया था। ये वो रोष पाकिस्तान की असफलता का रोष है, ये रोष पाकिस्तान को लगातार जो विश्व मंच से लताड़ा जा रहा है उसका रोष है, और ये रोष भारत के माध्यम से दिखा करके जला करके वो अपने देश में ओछी पब्लिसिटी करना चाहते हैं। उसे उनकी देश की जनता भी जानती है, और हमारा देश का एक व्यक्ति आप अपने प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है। All right, so those are the many reactions that are coming in as we see sporadic protests across the country. Anger is mounting over that remark that was made by Pakistan Foreign Minister Bilawal Bhutto against Prime Minister Modi, and this is India expressing its anger over the offence that has been taken after the insult to Prime Minister Modi. You see how effigies are being burnt and protesters going all out, standing with placards, demanding that this is and has been taken very, very badly in India. Bilawal Bhutto Zardari had no business to make that statement against Prime Minister Modi, and that India is angered after that insult to the Prime Minister. Yes, we've shown you pictures from Jammu, from New Delhi, from Mumbai. These are pictures from Ranchi. You see those live shots of how effigies are being burnt on camera, and these are अत्यंत ही अमर्यादित, बचकाना और राष्ट्र विरोधी तत्वों को प्रेरित करने वाला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और भारत की बहादुर सेना को अपमानित करने वाला है। हम उनके इस बयान की निंदा करते हैं। ये बड़ा आश्चर्य है कि जब पूरी दुनिया और पूरा देश इस बात को कह रहा है कि भारत के बहादुर जवानों ने घुसपैठियों के कृत्यों को जहां नाकाम किया, वहीं साथ ही साथ भारत के उन बहादुर जवानों के शौर्य और पराक्रम का सम्मान करने की बजाय उन्हें कटघरे में खड़ा करना, मुझे लगता है कि यह कोई भी भारतीय स्वीकार नहीं करेगा। और ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले डोकलाम में भी जब घुसपैठ हुई थी
उस समय भी भारत के जवानों के शौर्य और पराक्रम का सम्मान करने की बजाय उस समय भी कांग्रेस पार्टी और श्री राहुल गांधी का एक चरित्र जग जाहिर था। वे चीनी दूतावास के साथ मिलकर के भारत विरोधी कृत्यों को प्रश्रय दे रहे थे। यह अत्यंत शर्मनाक है। उनका बयान अत्यंत निंदनीय है। जब भी देश के सामने कोई चुनौती आती है, कोई संकट आता है, इनका ये चरित्र पूरा देश इसी रूप में देखता है। ये भारत को कटघरे में खड़ा करते हैं। भारत के बहादुर जवानों के शौर्य और पराक्रम पर उंगली उठाते हैं। हम कांग्रेस और राहुल गांधी की इस सोच की निंदा करते हैं और उनसे ये मांग करते हैं कि वह देश की और देश की जनता से, देश के बहादुर जवानों से माफी मांगे और देश को ये बार बार कटघरे में खड़ा करने की अपनी बचकाना और अमर्यादित आचरण से वह, मुझे लगता है कि उनको बचना चाहिए। So that's the latest reaction coming in from UP Chief Minister Yogi Adityanath, who's once again gone on to slam Rahul Gandhi over that statement he made, demoralizing our forces, as the BJP in an all-out attack has demanded that Rahul Gandhi must apologize. With that, we are slipping into a short commercial break. On the other side, we get you details as Chief Minister Nitish Kumar still says no sympathy. This despite the death toll in the Bihar Kuch tragedy that has now risen to over 70. Ladies and gentlemen, you expected the puzzle, but for a law person, this is not a game. Explain it to us, detective. Always! Everyone is in danger. All right, when's the murder mystery start? अरे आप इतनी दूर हमारे लिए? आपकी मेहनत कहां से कहां पहुंच रही है। मैं आपके एक साइन के लिए यहाँ नहीं आ सकता। हो गया आपका अकाउंट ओपन। हर बंद राह ओपन हो सकती है, लगता है सिर्फ दिल। धन्यवाद। एक्सिस बैंक, दिल से ओपन। Everyone looks at the world today. At Hyundai, we go beyond with experiences that take us forward. Inspired by our today, we design your tomorrow. Some said electric is the future. We said, why stop there? At Hyundai, we are going beyond mobility, and you are welcome to join us. एक दिन मैं सोते सोते गिर गया और मुझे कुछ नहीं हुआ। पता है किसने किया? घोस्ट ने। मेरा दोस्त है, वो हर बार मुझे बचा लेता है। घोस्ट को कैसे पता मैं अंधेरे से डरता हूँ? घोस्ट मेरा दोस्त है। मिलोगे? अरे कोई घोस्ट नहीं, रोनी के पापा ही हैं जो उसे सेफ रखते हैं। जैसे हैवेल्स लाइफ शील्ड वायर्स जो दिखते नहीं पर घर को सेफ रखते हैं, ना आग पकड़े ना जहरीली गैस छोड़े। वायर्स दैट डोंट कैच फायर। After Rahul Gandhi insults the army, the Jiju has tweeted a picture. It's a big message to Congress doubters. चाहे गलवान हो तो तवांग, हमारी सेना ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है।
Defense Minister Rajnath Singh applauds forces. He says, be it Galwan or Tawang, our forces prove valor. ये 1962 वाला भारत नहीं है, ये बात आप याद रखिए। BJP ramps up the attack on Rahul Gandhi, saying Rahul Gandhi and Congress must apologize. जो आतंकवादियों का सरगना है, आतंकवादियों का गढ़ है, जो 2 वक्त की रोटी देने में नाकाम है अपने बाशिंदों को, और वो भारत के प्रधानमंत्री जी पर ऊंची बयानबाजी करेगा, नाकाबिले बर्दाश्त है। Pakistan Foreign Minister Bilawal Bhutto has insulted Prime Minister Modi. Protests continue over Bilawal's remark across the country. Death toll in Bihar, whose tragedy has risen to 70, yet Chief Minister Nitish Kumar says no sympathy. Home Minister Amit Shah in West Bengal for Eastern Zonal Council meet. Mamata Banerjee and other chief ministers attend. Thank you for staying with Republicana. A big story we are tracking this afternoon. It is that comment that was made by Rahul Gandhi yet again, where he said that China is preparing to wage war against India and the centre is doing nothing about it. But in all this, he goes on to insult and demoralizes our forces yet again. This has led to a lot of anger mounting against Rahul Gandhi, where the BJP has also come out in full force and demanded that Rahul Gandhi must apologize. BJP has continued to question the Congress when it comes to their links to the CCP, when it comes to Chinese funding, and in the latest reaction by Union Minister Anurag Thakur, who's also said that Rahul Gandhi was seen having soup with Chinese officials during the Doklam incident. It is the BJP also now questioning the Congress as to what they did in their raid for the Indian army, and why is it that the Congress continues to demoralize and insult the army over and over again. It is one thing to be critical about the government and its moves, but it is another to run down the Indian army. And as the BJP continues to question the Congress and demand an apology from Rahul Gandhi, we have several responses coming in from union ministers who have slammed Rahul Gandhi over this very statement that he has made. Defense Minister Rajnath Singh, who once again lauded the valor of our forces and said that be it Doklam or Tawang, our forces stand strong at the LAC. Listen into the statement. देखिए, सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखना ये हमारा संकल्प है, ये हमारा कन्विक्शन है। चाहे काशी विश्वनाथ का प्रश्न हो, चाहे हमारे महाकाल उज्जैन का हो, बद्रीनाथ का हो, केदारनाथ का हो, सोमनाथ का हो, इनको भव्य स्वरूप प्रदान करना यह कोई अपराध हम लोगों ने नहीं किया है। भारत के किसी कौम के साथ कोई हमने डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है। यह तो भारत की विरासत है। भारत की विरासत को सुरक्षित रखना क्या यह अपराध है? इसको भी लेकर बहस की जाती है। और अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे सैकड़ों कानूनों को समाप्त कर दिया हम लोगों ने, जो पुराने पड़ गए थे, जिनका कोई अब रेलेवेंस नहीं रह गया था। और लगभग 1500 से अधिक कानूनों को समाप्त कर दिया। अभी कल की कैबिनेट में लगभग कई ऐसे एक्ट्स थे जो पुराने थे, जिनका की कोई रेलेवेंस अब रही नहीं गया था, उनको भी समाप्त कर दिया है। छोटे छोटे मामलों में उठाकर जेल में बंद कर देना। अब आप जानते हो कि छोटी छोटी चीजों में इसका कोई औचित्य नहीं है। अब एक सिलसिला इसमें सेना के बारे में भी चला है। थोड़ा सा भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन हो गए हैं।
प्रेस के हमारे मित्रों। राहुल गांधी जी के बयान पर मुझे कोई ज़्यादा हैरानी नहीं होती, लेकिन बार बार ये दिखाता है कि जब डोकलाम की घटना भी हुई तब भी राहुल गांधी जी किसी और के साथ नहीं, चाइनीज़ अधिकारियों के साथ सूप पीते नजर आए, जबकि भारतीय सेना के जवान अतिक्रमण करने वाले चीन के सैनिकों के साथ लोहा दिखाते हुए नजर आए। जब भारत के सैनिकों ने सर्जिकल स्ट्राइक की तब भी राहुल गांधी जी और विपक्ष के नेता प्रश्न चिन्ह खड़े करते नजर आए। शायद राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी को भारतीय सेना पर विश्वास कम है, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है भारतीय सेना इतनी मजबूत है जो सर्जिकल स्ट्राइक भी करती है और अतिक्रमण करने वालों को करारा जवाब भी देती है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का बयान अत्यंत ही अमर्यादित, बचकाना और राष्ट्र विरोधी तत्वों को प्रेरित करने वाला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और भारत की बहादुर सेना को अपमानित करने वाला है। हम उनके इस बयान की निंदा करते हैं। ये बड़ा आश्चर्य है कि जब पूरी दुनिया और पूरा देश इस बात को कह रहा है कि भारत के बहादुर जवानों ने घुसपैठियों के कृत्यों को जहां नाकाम किया, वहीं साथ ही साथ भारत के उन बहादुर जवानों के शौर्य और पराक्रम का सम्मान करने की बजाय उन्हें कटघरे में खड़ा करना, मुझे लगता है कि यह कोई भी भारतीय स्वीकार नहीं करेगा। और ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले डोकलाम में भी जब घुसपैठ हुई थी, उस समय भी भारत के जवानों के शौर्य और पराक्रम का सम्मान करने की बजाय उस समय भी कांग्रेस पार्टी और श्री राहुल गांधी का एक चरित्र जग जाहिर था। वे चीनी दूतावास के साथ मिलकर के भारत विरोधी कृत्यों को प्रश्रय दे रहे थे। अत्यंत शर्मनाक है। उनका बयान अत्यंत निंदनीय है। जब भी देश के सामने कोई चुनौती आती है, कोई संकट आता है, इनका ये चरित्र पूरा देश इसी रूप में देखता है। ये भारत को कटघरे में खड़ा करते हैं, भारत के बहादुर जवानों के शौर्य और पराक्रम पर उंगली उठाते हैं। हम कांग्रेस और राहुल गांधी की इस सोच की निंदा करते हैं और उनसे ये मांग करते हैं कि वह देश की और देश की जनता से, देश के बहादुर जवानों से माफी मांगे और देश को ये बार बार कटघरे में खड़ा करने की अपनी बचकाना और अमर्यादित आचरण से वह, मुझे लगता है कि उनको बचना चाहिए। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, पुतला जलाया जा रहा है यहाँ पे बिलावल भुट्टो का यहाँ पर, और साथ ही पाकिस्तानी झंडे को भी यहाँ पे रखा गया, उसको भी जलाया जा रहा है। जो यहाँ पे युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं भाजपा के, उनके द्वारा यहाँ पे साफ तौर पे यहाँ पे लाइव तस्वीरें आप देख सकते, बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइव तस्वीरें, यहाँ पे आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। और यहाँ पे नारे भी लगाए जा रहे हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद के तमाम यहाँ पे जो कार्यकर्ता है उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। और भी कार्यकर्ता यहाँ पे किस तरीके से देखते हैं बयान को लेकर के। हाय 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 हाय
देखिए बिलावल भुट्टो का पुतला लाया गया, उसको भी जलाने की यहाँ पे तैयारी की जा रही है। साफ तौर पे आप तस्वीरें यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर लोगों में काफी रोष है, जो कार्यकर्ता है काफी रोष में है। पूरे देश में बिलावल भुट्टो के बयान को लेकर के यहाँ प्रोटेस्ट किया जा रहा है। ये जम्मू की लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिलावल भुट्टो का पुतला जलाया जा रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पे कार्यकर्ताओं में काफी रोष है, क्योंकि यहाँ पीएम मोदी का जो छवि है उसको कहीं ना कहीं धूमिल करने की कोशिश बिलावल भुट्टो के द्वारा किया जा रहा है। उसको लेकर के यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आप साफ तौर पे देख सकते हैं। देखिए बौखला गया है पाकिस्तान, जिस तरीके से बयानबाजी की जा रही है कहीं ना कहीं बौखला गया पाकिस्तान, और कहीं ना कहीं डर है उसे कि जिस तरीके से चाइना रहे हैं। इसमें तमाम बेरोजगार हैं, महिलाएं हैं, शराब ठेकेदार जो जिनकी पेनल्टी माफ नहीं हुई है वो है, सीएचए के स्टूडेंट्स हैं, बेरोजगार हैं, और तमाम लोग यहाँ पे आप देखेंगे। ये आप रोड देखेंगे, इस तस्वीर को देखने के बाद समझ सकते हैं सारी चीज जो है, सब कुछ जो है वो यहाँ पे स्थिति आपको दिखाई दे रही होगी। और ये तमाम जो आप तस्वीर है, एक लॉन्ग शॉट मैं कहूँगा विजय महेश से एक बार दिखाएं कि कितनी तादाद में और कई किलोमीटर लंबी ये अचानक से समर्थक जो किरोड़ी के हैं वो पहुंचे हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के समर्थक जो हैं वो सीधे के सीधे आए और बेरोजगारों को साथ लेकर के आए, महिलाओं को साथ लेकर के आए, किसानों को साथ लेकर के आए। और किरोड़ी लाल मीणा से जब हमने बातचीत की तो उनका कहना यही था कि हमने पूरी तरीके से यहाँ पे राहुल से सवाल और जवाब करने का मन बनाया है। किरोड़ी से जब हमने बातचीत करने की कोशिश की डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफिला, पुलिस का लंबा काफिला जो है वो आपको देखने को मिल रहा होगा। लंबा जाम पीछे आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, लेकिन वापस से लोगों से बात करने के लिए मैं एक बार जाऊँगा, लोगों से बात करूँगा। हाँ, क्या समस्या है आपकी? सर, हम कोरोना में काम कर रहे थे तो गहलोत सरकार ने हमको 31 मार्च को निकाल फेंका। जब से हमारा धरना चल रहा है, हम दर दर की भटक रहे हैं रोडों पे, और पुलिस प्रशासन द्वारा हमको धमकाया जा रहा है, डंडी लाठी चार्ज किया जा रहा है। राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि मध्य प्रदेश में वो बोल रहे हैं कि कोरोना वॉरियर्स को हमारी सरकार आएगी तो नौकरी देंगे, और राजस्थान में वही कांग्रेस सरकार है, फिर भी कोरोना वॉरियर्स को हटा रखा है। पीएम मोदी ने 100 दिन काम करने पर हमको कुछ बोनस अंक या नौकरी देने की बहाली की थी, परंतु गहलोत सरकार हमारे साथ कुछ भी नहीं कर रही है। हाँ। सर, हमारे कोरोना काल में हम लोगों ने दारू नहीं पिला पाए, लोगों को जबरदस्ती दारू पिलाने के लिए सरकार बोली, उसके बदले में हम लोगों यहाँ पे आप देखिए तरीके जो है, तरीके यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको नजर आएगा कि किस कदर में किस तरीके से यहाँ पे लोग जो हैं यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। लगातार यहाँ पे लोग जो है प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पे तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ये यात्रा जो है उसको आप देख रहे होंगे किस तरीके से यात्रा कंटिन्यू चल रही है। और ये विरोध यात्रा, सरकार हमारी जमीन नीलाम कर रही है। कोरोना काल में जो दुकानें बंद थी तो हम दारू किससे पिलाए, शराब नहीं पिलाने को। यहाँ पे आप सब सारी चीजें देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे तस्वीरें आप देखेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट महेश से कहना चाहूंगा कि एक बार तस्वीरें ये दिखाएं, ये तस्वीरें दिखाएं महेश, एक बार तस्वीरें ये दिखाएं किस तरीके से यात्रा है। हाँ। यात्रा नहीं, वो भारत जोड़ो नहीं, वो भारत तोड़ो यात्रा कर रहे हैं। ठेकेदारों की जमीन नीलाम हो रही है या भारत तोड़ो यात्रा हो रही है। हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं और राहुल गांधी पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। हमारे ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है, हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर आज एक एक करके बताइए सर, राहुल गांधी पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और ये भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, भारत तोड़ो यात्रा चल रही है। हम शांतिपूर्वक हमारी मांगे रख रहे हैं। पुलिस हम पे बर्बरतापूर्वक डंडे बरसा रही है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी यहाँ से जाएंगे। हम हमारी मांगे रख रहे हैं, तो क्या हमें ये अधिकार नहीं है? इस देश में स्वतंत्रता का कोई अधिकार नहीं है? ये बताइए पुलिस कैसा हमारे पे अत्याचार कर रही है। राहुल गांधी एक तरफ पे कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि बीजेपी सरकार ने अग्निपथ को लेके 4 साल में नौकरी से निकाल दिया था लात मार के। लेकिन वही बात मैं कहना चाहता हूं कि सीएचए के साथ कांग्रेस सरकार ने क्या किया, उन्होंने तो 9 महीने के अंदर ही काम लेके लात मार के निकाल दिया, जबकि अन्य राज्यों में कोरोना की। यहाँ पे आप तस्वीरें देखेंगे दूसरी तरफ। So those are live scenes from a BJP protest in Dausa, where BJP is raising their voice against the Gehlot government.
questioning why they are not being allowed to stage this peaceful protest, as they pose multiple questions to the Gehlot government over the issues that are being faced in the state of Rajasthan. On that note, we step into a very short commercial break. We'll also take a quick check of what's lined up on the other side. Yes, the big stories we're tracking for you this afternoon is how Chief Minister Nitish Kumar continues to say no sympathy, this despite the death toll in the Bihar Bhutto tragedy having risen to 70. Also, Home Minister Amit Shah in West Bengal for Eastern Zonal Council meet, where Mamata Banerjee and other chief ministers are also in attendance. Your favorite service provider, Den, which gets you the best of entertainment, is back with something very special. अभी मजा आएगा ना भिड़ो. Your 3 favorite movie channels are bringing in super blockbuster films with features like wider picture and crystal clear sound straight to your home. Wow. Oh, I love that expression. To subscribe to your favorite channels, contact your local cable TV operator today or call Den toll-free number 1-800-419-2020 now. यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के जरिए उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेश के एक बड़े केंद्र के रूप में उभर रहा है। आर्थिक विकास एवं समृद्धि की नई ऊंचाइयां प्राप्त कर रहा उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी, रक्षा सहित अन्य क्षेत्रों के लिए निवेश का उत्कृष्ट गंतव्य स्थान बनकर उभर रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करना है। उठो, जागो, दौड़ो तुम, डायबिटीज को रोको तुम। Get Bhutto's diabetes care program with a free glucometer and expert advice. Give a missed call on 740 1100. Addressing the FICCI annual convention and AGM in the national capital, Defence Minister Rajnath Singh made a huge statement. He said that whether it is Galwan or Tawang, our defence forces have proved their bravery and valour. हमारी सेना ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। Protests were staged in Jammu after Pakistan Foreign Minister Bilawal Bhutto made that remark against Prime Minister Modi. Effigies were burned, slogans were raised by angry protesters. Stepping into a short commercial break, on the other side, details of the Bhutto tragedy where the death toll has risen to 70. Will smart manufacturing complement traditional manufacturing processes or replace them entirely? India will be able to contribute approximately 5% of the global market in terms of when we talk about additive manufacturing. What kind of opportunities does it hold for the BTech students? Amrita University, I would say, is ideal for students who come into manufacturing, additive manufacturing. To know more, watch Amrita School of Engineering presents Shaping the Future of India at these times only on Republic TV. Tonight, a murder will be committed. If anyone can name the killer,
that person wins our game. This is truly delightful. Holy There has been a murder. For one person, this is not a game. A killer wouldn't hesitate to kill again. You must be really great at clues. I'm very bad at dumb things. Glass Onion, a Knives Out mystery. Hey, boss. Rahul, how come you're here? शाहरुख ने बताया. Guys, just 1 second. Choosing a car for my mom. What? Online car shopping? Wow, that's so cool, yeah. शाहरुख ने बताया. मैंने? Wait up. Booking a car service. Booking a service from here. क्यों? तुझे शाहरुख ने नहीं बताया? इसने पूछा ही नहीं. Charging station for my electric car. Ah, found it. Really? How? शाहरुख ने बताया. There's so much more जो शाहरुख ने नहीं बताया. It's all on the industry first My Hyundai app. Open a world of possibility with My Hyundai app. One app, many worlds. Darling, you don't even have a Hyundai. Honey, that's exactly what I'm doing. Buying one. क्योंकि शाहरुख ने बताया. India welcomes those who further India's pride across the globe. Indian diaspora, partners of New India's growth journey in Amrit Kaal. Come and be a part of the 17th Pravasi Bharati Divas from 8th to 10th January 2023 at Indore, Madhya Pradesh, India. For registration, log on to pbdindia.gov.in. जाग उठा एक राष्ट्र करने हर चुनौती का सामना. मातृभूमि की करने रक्षा उठा एक महायुद्ध. भारतवर्ष के अमर शूरवीरों में एक अध्याय, एक संग्राम और उसके नायक ब्रह्मपुत्र के शूरवीर लासित बोरफुकन. प्रश्न चिन्ह के साथ घिरी हुई है. हम सबको यह भी पता है कि उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा पर भी प्रश्न उठाए थे. यह बताता है कि वह भारत की भाषा नहीं बोलते हैं, वह भाषा बोलते हैं जो पाकिस्तान बोलता है. मैं पुनः ऐसे बयान की निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं और सच में यह देश के लिए राहुल गांधी की मानसिकता को दर्शाता है. यह उनके मानसिक दिवालियेपन का नतीजा है, ऐसा मैं मानता हूं. Amity has been ranked India's #1 private university for the 10th year by India Today, a testimony to Amity's world-class education whilst imbibing values and sanskars in students. Volkswagen Tygoon, India's safest SUVW. Volkswagen. कुछ मेरा, कुछ तुम्हारा. इसलिए ग्रीन लैम लैमिनेट्स, सपने आपके, लैमिनेट्स हमारा. अमेजिंग स्पेसेस के लिए कुछ मेरा, कुछ तुम्हारा. क्या हुआ रोहन, क्या सोच रहा है? रिया, पहली सैलरी मिली है, तुम भी कुछ आइडिया दो. एक्सपेंसेस को कैसे प्लान किया जाए? रोहन, एक्सपेंसेस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट प्लान करना भी जरूरी है. देखो, सैलरी का कुछ हिस्सा घर के रेगुलर खर्चे के लिए और कुछ मैं अपने लिए भी तो सोच सकता हूँ ना. लेकिन इन्वेस्ट कहाँ करूँ? सिंपल है, एनपीएस में. एनपीएस में? रिया, अभी तो मैंने कमाना शुरू किया है, इतना आगे के लिए अभी से क्यों पैसे जोड़ूं? वो देखो, एक एक करके ईंट जोड़ी जाती है, तब जाके एक घर तैयार होता है. वैसे ही अभी से पैसे जोड़कर हम भी अपना रिटायरमेंट सुखी बना सकते हैं. बात में तो दम है. एनपीएस कम लागत वाली फ्लेक्सिबल लॉन्ग टर्म योजना है.
जिससे आपकी बचत ग्रो होकर पेंशन का लाभ देती है। अच्छा, फिर तो मैं अभी अपना एनपीएस अकाउंट ओपन करता हूँ। जो कल की सोचते हैं वो आज से ही थोड़ा-थोड़ा जोड़ते हैं। पेंशन है तो टेंशन नहीं। एनपीएस में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। मजबूती डाली रूट्स में, दिख रहा सबूत रे, दूध से बना दूध रे, शुरू हुआ सब दूध से, बना दिया अटूट रे, दिख रहा सबूत रे, दूध से बना दूध रे, शुरू हुआ सब दूध से, शुरू हुआ सब दूध से। कुछ पैसे बोरो करने थे। लोन चाहिए तो पैसाबाजार.com पर जाइए। पैसाबाजार.com, लोन सही मिलेगा यहीं। Hey Rahul, what's up? Hey, kicked about our first date? Of course. Benefits up to rupees 30,000 only at the Citroën C3 Carnival. Book today. बस। बॉल। खट्टे मीठे घूट कटक के ले तू दिल को ठूस, just let loose, लिमोनाटा, just let loose। क्या हुआ चैंपियन? दिन रात प्रैक्टिस करनी पड़ती है, यहाँ तो रात को स्टेडियम ही बंद हो जाता है। एक काम करो ना, चेन छोड़ छोड़ के लगाना। पापा अब करो दिन रात प्रैक्टिस। चैंपियन। एक्स्ट्रा सेफ पॉलीकैप ग्रीन वायर, आपके सपनों को रखे सेफ। Your favorite service provider, 10, which gets you the best of entertainment, is back with something very special. अभी मजा आएगा ना भिड़ो। Your 3 favorite movie channels are bringing in super blockbuster films with features like wider picture and crystal clear sound straight to your home. Wow. Oh, I love that expression. To subscribe to your favorite channels, contact your local cable TV operator today or call 10 toll-free number 1-800-419-2020 now. A day after Rahul insults the army, Rijiju tweets a picture. It is a big message to Congress doubters. चाहे गलवान हो तो तवांग, हमारी सेना ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, Defense Minister Rajnath Singh applauds forces. He says, be it Galwan or Tawang, forces proved valor. ये बात आप याद रखिए। BJP ramps up the attack on Rahul Gandhi, says Rahul Gandhi and Congress must apologize.
जो आतंकवादियों का सरगना है, आतंकवादियों का गढ़ है, जो 2 वक्त की रोटी देने में नाकाम है अपने बाशिंदों को, और वो भारत के प्रधानमंत्री जी पर ऊंची बयानबाजी करेगा, नाकाबिले बर्दाश्त है। Pakistan Foreign Minister Bilawal Bhutto has insulted Prime Minister Modi. Protests continue over Bilawal's remark across the country. Death toll in Bihar Huj tragedy rises to 70, yet Chief Minister Nitish Kumar says no sympathy. Home Minister Amit Shah in West Bengal for Eastern Zonal Council meet. Mamata Banerjee and other chief ministers attend. And we continue to get you pictures coming in from various parts of the country over the protests that are being staged after Pakistan Foreign Minister Bilawal Bhutto made that insulting remark against Prime Minister Modi. That has evoked a lot of anger, where you see protesters expressing their anger. Effigies have been burnt, and these are the latest pictures coming in from Srinagar. So far until now, not only is it New Delhi or Mumbai, but also Ranchi, Srinagar, Jammu, Patna, where protests are being staged. Arawat is with me from Srinagar. Arawat, what are you picking up from the protesters there? What are they saying? Right now I am here in Srinagar and BJP state headquarters. Right now I have with us Mansoor Bhatt. Please tell us about this incident that happened with yesterday the statement came out. देखिए, जैसे आपको पता है, जो कल एक बेहुदा और बेशर्माना बयान कल पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क की तरफ से जो बिलावल जरदारी भुट्टो ने दिया है हमारे चहीते वजीर आजम के खिलाफ, वो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस तरीके से आपने देखा आज देश भर के कार्यकर्ताओं ने पूरे मुल्क में, पूरे भारत में प्रदर्शन किए हैं, सड़कों पे निकले। यहाँ पर भी आपने देखना हजारों की संख्या में हमारे कार्यकर्ताओं ने जो गुस्सा है वो सड़कों पे दिखाया। और आप देख रहे हैं जो एक बौखलाहट